Constitution limits the power of the government, and the idea of constitution also limits the power of. Are you getting it? Without having constitution in reality, you can still have the idea of the constitution. Today we are going to start with the salient features of the constitution. अब ये टॉपिक से क्यों शुरू कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? ये टॉपिक आप पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद भी डिस्कस कर सकते हो. अभी तो आपको पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, तो आप कैसे बताओगे that what are the salient features of the constitution? Salient feature means, okay, I'm not starting the class yet because online students have yet to be connected. In the meantime, I thought let's just warm up. Salient features का मतलब क्या है? Important features. What features? Key features, characteristics, qualities, okay. Characteristics of the constitution. उसका पर्पस ये है कि how it is different from other constitutions. No, how it is different from other constitutions of the world. तो ये कौन बता सकता है कि salient features constitution के क्या है? ये कौन बता सकता है? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है. हमने तो पढ़ा नहीं अभी. बट वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक वी हैव चोजन बिकॉज उससे हमें हेल्प मिलेगा टू इनिशिएट इनटू द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, उसमें कुछ बहुत सिंपल होंगे लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है, कुछ कंफ्यूजन होगा. And it is good to have complications and then dissolve them, right? Make it easy. Then everything becomes easy for you. Very simple. Okay, so let's start now. Before I will start discussing the salient features, that is the important features, Constitution के important features क्या-क्या हैं, उसके पहले हमें कुछ basic concepts को समझना है. राइट ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने रिकॉर्डेड सेशन में पहले दिए हुए थे, कुछ लोगों ने देखे हैं, कुछ ने नहीं देखे, लेकिन उसमें मुझ कुछ ऐड भी करूंगा अभी. राइट तो ये और ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव हो जाएगा. जैसे वहाँ पे मैंने रूल ऑफ लॉ नहीं डिस्कस किया है, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहला, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यू शुड नो इन पॉलिटी? ऑफ कोर्स फॉरगेट अबाउट पॉलिटी इटसेल्फ, पॉलिटी में नहीं जाते अभी. टर्म पॉलिटी, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म वी शुड नो इन पॉलिटी? Polity itself is the first term, of course. Let's keep it aside. Apart from polity, which is the first term we should know, is law, okay, or constitution. Is constitution a law? Anyone saying no? Constitution is a law. It is a law. Okay, it is a law. It is the, what is it? It is the basic law of the land. It is the first law of the country. ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है. Constitution is the basic law, first law. But Constitution as a law and other laws, they are different. Constitution किसने बनाया? Constituent Assembly. And law कौन बनाता है? Parliament. So there is a difference, right? But Parliament also has the power of amending the Constitution. यानी एक तो Constitution हो गया, इसका वॉल्यूम किधर से कम होगा? टैब का. हो गया, डन. ओके, तो अभी क्या हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूशन, वन इज कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉज. राइट, हु अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट, बाय मेकिंग लॉ. बट दैट लॉ इज अ स्पेशल लॉ. दैट लॉ इज अ special law. Why it is special?
because it is to be passed by special majority. Then parliament also makes other laws by which majority? Simple majority. जैसे एग्जाम्पल लॉ के क्या हो गए? नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ जिसको बोलते हो, राइट? या फिर उसका एक टेक्निकल टर्म भी है, वो क्या है? स्टैट्यूटरी लॉ. ओके, स्टैट्यूटरी लॉ क्या है? इट्स अ ऑर्डिनरी लॉ मेड बाय द, or you can just say that a law made by parliament is what law? Statutory law, which is passed by simple majority. अभी 3 different types हो गए ना, but constitution और constitution amendment, they are similar to each other because it has to do with the constitution. Constitution किसने बनाया? Constituent Assembly ने बनाया. Constitution amend कौन करता है? Parliament करता है. यानी पार्लियामेंट के पास कुछ वो पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है. कैन वी से दिस? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट? और कौन अमेंड कर रहा है? पार्लियामेंट. तो क्या पार्लियामेंट के पास भी कुछ पावर्स हुए ना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए? तो पार्लियामेंट, वी कैन से दैट पार्लियामेंट हैज सम पावर विच इज सिमिलर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इस पावर को क्या बोलेंगे? what are these powers called? Amending power. Legislative power is a normal law making power, right? Which you can also say as statutory power. Statutory power is normal law making. Ordinary law जो बनाते हैं उसको statutory power. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो पावर है पार्लियामेंट का, उसको बोलते हैं हम कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, क्या बोलते हैं? पावर ऑफ द पार्लियामेंट. हु हैड कंस्टिट्यूएंट पावर? Who had constituent powers earlier? It was with constituent assembly. That's why it was constituent, means when you are constituting something, creating something, like power to create something new, right? And that power is there with parliament also. That power to bring changes in the constitution, we call this power as what power? Constituent power. आपको ये बात याद हो गई अब कि पार्लियामेंट के पास तो बहुत तरह की पावर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट क्या क्या करता है. बट 2 पावर्स यू ऑलरेडी नो. वन इज कंस्टिट्यूएंट पावर, अनदर इज स्टैट्यूटरी पावर और लेजिस्लेटिव पावर, और वी कैन से एलैबोरेटली ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर. आर वी क्लियर? अच्छा, अभी इज इट नेसेसरी टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन? Can we do without constitution also? No. Ancient times we never had constitution. Medieval times we never had constitution. Most of the British times we never had. And during British times itself, slowly the constitution, it starts to evolve. British times में constitution धीरे धीरे evolve करना शुरू हुआ. कब से शुरू हुआ? Any idea? अगर आपको constitution का history पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कब से हो रहा है, तो किस ईयर से शुरू करना चाहिए? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट. ओके, यू कैन स्टार्ट विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो. 12 मैग्ना कार्टा इज इन ब्रिटेन, नो, नॉट इन इंडिया. हम इंडिया की बात कर रहे हैं. तो इंडिया में जो भी सिस्टम इवॉल्व हुआ ना, वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से इवॉल्व हुआ. जो हमारा अभी जो सिस्टम है, वो जैसे आप बोलते हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पहले भी कुछ था, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसके पहले 1909 था, उसके पहले काउंसिल्स एक्ट थे, उसके पहले चार्टर एक्ट थे, फिर चार्टर था. और यू विल गो बैक टू 1600 व्हेन क्वीन एलिजाबेथ I had issued the charter which formed the East India Company, right? तो कहीं ना कहीं वहां से शुरू करना चाहिए अगर पूरा क्लैरिटी चाहिए. लेकिन फॉर अ पॉलिटी स्टूडेंट्स इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट इनटू ऑल द डिटेल्स. इन हिस्ट्री यू विल गो इनटू
all the details of that. But in polity, we will just selectively pick up important changes, how constitution has evolved. Clear? Okay. So in today's class, first we are going to discuss about the first term. What I expected from you that you will say is that what we need to learn in polity, apart from polity itself, is state, then government, then the relationship with the constitution. Okay, then we have to understand constitutionalism. Constitutionalism kya hota hai? There itself, then we will discuss rule of law and different types of laws. Right? Let's divide our today's class in two parts. Today, because we don't have to do as such a revision of any class, because every day we will be revising the previous day's class. Today we are starting up, so I'll just repeat few things which I discussed in the recorded session before. We will repeat those things. So first half we will discuss some basics, then we will come to salient features of the constitution, in which again we will discuss a lot of basic concepts. उसमें भी बहुत basic concepts, कुछ और evolved concepts उसमें है, right? थोड़ी सी complicated चीजें हैं जो हमें फिर अच्छे से समझनी होंगी, which I will repeat till the time you have understood it properly. Clear? So let us start first with the understanding of state, right? The term state. Two things are there. First of all, we need to know what state is. State kya hai? And second thing is how it comes into existence. Now, how it comes into existence is not very important for us. Okay, students of political science, they study this in detail, how state comes into existence. Right? Abhi jo India is a state, right? Are you clear about the examples of state? All what you call as countries in the world are actually are states. India is a state. Let us first define it, and then we will see how it comes into, briefly, how it comes into existence. So state can be defined as what? Ab dekho, whenever we will be making notes, right? What shall be the quality of the notes? Should it be very elaborate in language? Should it be as brief as possible? As brief, yet it should be self-explanatory. Right? तो हम उतना ही लिखेंगे जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है, सो दैट रिविजन रिमेंबरिंग बिकम्स इजियर. अगर आप इतना याद रखोगे तो आपको सब कुछ याद रहे, पूरी बैकग्राउंड स्टोरी अपने आप आ जाए. राइट? तो स्टेट इज व्हाट? एन एंटिटी. एन entity. Entity means a unit, right? Something that is there, an entity with four elements. Entity with four elements. There are complicated ways to define also, but first we will learn the basic definition, right? Which in fact is the proper definition of state. So state is an entity with four elements. What are the four elements of the state? A state has a territory, and this territory has population. Population has government, and government is sovereign. Sequence में याद रहेगा ना? Territory with population, which is having government, which is sovereign. So let's write the four terms. First of all, territory. Please keep writing all this. Whatever I write on the board, you have to write. Whatever I will dictate, though I dictate less, that also you have to write. And if you want to write anything else also, you are always welcome, right? कभी मैं कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ बीच में, right? ऐसे ही explanation में, if you want to write something, you should write. Territory, population. I sometimes use abbreviations like this. I hope you will understand it, okay? Just to save time. Third one, territory with population which is having government, and government is sovereign. तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा टर्म sovereign के बारे में भी जानना होगा. Government also we will discuss, but let's first talk about sovereignty, right? So government, you can say sovereignty, right? This is the quality or the value. Sovereignty का क्या मतलब है? What it means? It means something which has all the power, the supreme power. A supreme power may not necessarily be absolute power, right?
like in India, someone is supreme. Who is supreme? Constitution is supreme, prime minister is supreme, cabinet is supreme, parliament is supreme, judiciary is supreme, or the people are supreme? आइडियली स्पीकिंग तो सारा पावर एक्सरसाइज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, राइट? आइडियली स्पीकिंग, हु इज एक्सरसाइजिंग ऑल द पावर? मैक्सिमम पावर इज विद द गवर्नमेंट ओनली, नो? वी आर नॉट सेइंग ऑल द पावर. मैक्सिमम पावर इज विद द गवर्नमेंट, राइट? So government is exercising all the power, but government is exercising power on behalf of someone. Government is sourcing its power from someone. प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास पावर कहां से आ रहा है? आपने वोट दिया इसलिए आ रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, लेकिन आपने वोट भी तो दिया. और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन बैठा था? Representatives of people, right? It is people's representatives who have made the constitution. That is why the constitution starts with the word we the people of India. Constitution में ही clear है कि सबसे ऊपर कौन है. Have you got the point? Who is sovereign in India? People are sovereign in India, and the power has been delegated by the people to the government to exercise it, right? Government sovereign है, लेकिन government की sovereignty कहां से source हो रही है? People से source हो रही है. ये इंडिया का सिनेरियो है, ये सब कंट्री में ऐसा नहीं. In Britain, parliament is sovereign, people are not sovereign. I will tell you why and how. In Britain, parliament is sovereign. Are you getting the point? So whose sovereign is clear to us? People are sovereign. Okay, sovereignty means what? What does sovereignty mean? Sovereignty means supremacy. It means supremacy. जब भी आपको कुछ भी समझना है तो आप उससे रिलेटेड ऑल वर्ड्स सोचो, राइट? उसका क्या क्या और मतलब हो सकता है, वो वर्ड्स जब आप एलैबोरेट करोगे मेनी वर्ड्स में, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल्सो, राइट? जैसे सॉवरेनिटी है, द मोमेंट यू थिंक अबाउट सॉवरेनिटी 10 वर्ड्स शुड कम टू योर माइंड, तभी तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे ना. जैसे सॉवरेनिटी है तो सुप्रीमेसी हो गया, ऑल पावरफुल हो गया, सुप्रीम पावर हो गया, कमांड हो गया, राइट? So who has all this power? The government has all the power. Supremacy, right? Supremacy is, sovereignty is of two types. Government is sovereign internally also and it is sovereign externally also. बहुत टाइम ऐसा होता है लोग सॉवरेनिटी का केवल एक्सटर्नल एस्पेक्ट ही ध्यान में रखते हैं, इंटरनल भूल जाते हैं. यूजुअली हम कहते हैं ना, इंडिया इज अ सॉवरेन. सॉवरेन मीन्स आउटसाइड पावर कैन नॉट इंटरफियर. इंडिया इज सॉवरेन बिकॉज not only outside power cannot influence, but inside the country also there is a supreme authority, and that is there with the government के पास वो power है, right? So now what we will do, we will just write down about sovereignty here again. Sovereignty has two aspects. What are the two aspects of sovereignty? First one is internal. Internal means what? Internal sovereignty means what? It means that government has all the power over everything inside the state or inside the country, right? Country के अंदर government के पास सारा power है. कौन all powerful है inside the country? Internally, government. So internal sovereignty means that government is all powerful internally, right? Internally means inside the country, within the country. Second aspect है, second is external. Internal, second is external aspect. External sovereignty means that the government is all powerful. Externally means outside power, बाहर के कोई भी power country को influence नहीं कर सकता.
So no outside power can influence. No outside power can influence. क्लियर? स्टेट एंड सॉवरेनिटी इज क्लियर टू अस. अब इसके बारे में थोड़ा सोच लो. सॉवरेनिटी क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, राइट? नाउ क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्या क्या फैक्टर्स हैं? यस, यस, एग्जैक्टली, राइट, एग्जैक्टली. तो इसमें दो क्वेश्चन हो सकता है. एक तो एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या है सॉवरेनिटी को, और इंटरनल चैलेंजेस क्या है, राइट? एक्सटर्नल चैलेंजेस इज इजी टू आंसर और इंटरनल इज इजी टू आंसर. विच वन इज इजी टू आंसर? एक्सटर्नल इज इजी, राइट? क्या क्या फैक्टर्स चैलेंज करते हैं एक्सटर्नली? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या कह लो बिग पावर्स, बिकॉज दे कीप ऑन इंटरफियरिंग. दिस इज वन चैलेंज. यूनाइटेड नेशंस भी चैलेंज हो सकता है. सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक्शन अगेंस्ट द विश ऑफ सम कंट्री ले लेता है, राइट? जैसे अभी सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट, या पहले जो भी वॉर्स हो रहा है, या कंट्री कोई दूसरे कंट्री को ऑक्यूपाई कर रही है, तो फिर यूएन एक्शन ले रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन ले रहा है, तो वो कंट्री तो बोलेगा ना मेरा सॉवरेनिटी जा रहा है, बिकॉज समवन फ्रॉम आउटसाइड इज इन्फ्लुएंसिंग, राइट? इंटरनेशनल एनजीओज हो सकते हैं, कार्टल्स हो सकते हैं, राइट? नेटवर्क टेररिस्ट हो सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, आपके जितने भी नेटवर्क्स हैं ये हो सकते हैं, बहुत तरह के नेटवर्क हैं. All these are challenges to our external sovereignty. And what are the challenges to the, we are not writing this, maybe we will discuss these things as a question afterwards, okay? I'm just trying to make you people understand कि आप जब भी कोई टर्म पढ़ रहे हो ना, तो उसके बारे में आपको सोचना है. उसके बारे में ये भी सोचना है कि कैसे ये रिलेटेड है, इशू क्या है, सॉवरेनिटी से रिलेटेड इशू क्या है, क्या क्वेश्चन हो सकता है, राइट? when you will think, then you will start. जब आप एक बार सोचते हो ना, तो वो बात आपके दिमाग में रहेगी. अगर आपने 10 बातें सोच ली, तो एग्जाम में क्या होगा? 10 बातें आपको तुरंत स्ट्राइक करेगी. 10 थॉट्स विल कम इमीडिएटली टू यू. So thinking is very important, right? What are the challenges to internal sovereignty? Militancy and what? Pressure groups. Who said that? Pressure group is a challenge to sovereignty. Not necessarily. Pressure groups can be good also, no? आप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि अच्छा परफॉर्म करो, तो वो तो अच्छी बात है ना. What are the challenges I must? Farmers, sometime you can say, some groups which question the government all the time can say protest. आप प्रेशर ग्रुप नहीं बोल सकते. वही प्रेशर ग्रुप जो प्रोटेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, रेबेल कर रहा है, उसको आप बोलोगे कि ये इंटरनल सॉवरेनिटी को चैलेंज कर. तो प्रोटेस्ट कैन बी, यस. रेबेलियन कैन बी, नक्सलिज्म, माओइज्म, राइट? और टेररिस्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. से क्राइम अगेंस्ट हुम? क्राइम अगेंस्ट हुम? कौन से क्राइम है जिसको आप बोल सकते हो दिस इज चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी? क्राइम अगेंस्ट हुम? क्राइम अगेंस्ट स्टेट, राइट? क्योंकि सॉवरेनिटी किसका है? गवर्नमेंट या स्टेट का है, राइट? तो उसको चैलेंज कर रहा है. तो क्राइम अगेंस्ट स्टेट, जो भी स्टेट के अगेंस्ट क्राइम कर रहा है. जैसे अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को आजकल जेल भेज देते हैं. कोई कुछ बोल रहा है या ओपनली बहुत एक्सप्रेस कर रहा है, तो एक्शन हो जा रहा है. कई बार ऐसा होता है, पहले भी हुआ है. तो उसको क्या बोलते हो आप? सेडिशन. गवर्नमेंट क्या चार्जेस लगाता है? सेडिशन चार्जेस. सेडिशन चार्जेस क्यों लग रहा है? आपने स्टेट के अगेंस्ट बात कर दी, आपने स्टेट की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर दिया. तो सेडिशियस एक्ट हो सकते हैं. वेदर एक्ट्स आर सेडिशियस और नॉट, दिस कोर्ट विल डिसाइड, था कि नहीं था. लेकिन अगर सेडिशियस एक्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप किसी तरह का वायलेंस इंसाइट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में. हैव यू गॉट इट? अब देखो, एक वर्ड है लेकिन कितने सारे लिंकेजेस हैं, कितने सारे इश्यूज से वो रिलेटेड होगा. यस. कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म, यस, यस, डेफिनेटली. एनीथिंग दैट इज फॉलिंग अपार्ट, that is breaking the country, state, government, or that is a challenge, will be a challenge to
sovereignty. Even communalism, political parties are not. Till the time they do something, some seditious act, till the time they do something destructive, you cannot say that political parties are good. Don't have a bad perception of political parties. They are meant for some good purpose. Okay? What? Internal emergency is a response to the challenge to the sovereignty. इंटरनल इमरजेंसी में तो गवर्नमेंट के पास और पावर आ जाता है ना, तो सॉवरेनिटी तो बढ़ गई, चैलेंज कहाँ हुई? चैलेंज था इसलिए गवर्नमेंट ने अपना पावर बढ़ा दिया. इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई? इंटरनल डिस्टर्बेंस, राइट? दैट वाज द बेसिस, इंटरनल डिस्टर्बेंस. तो दैट वाज अ रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस एज शी अज्यूम्ड. उनको लगा कि ये चैलेंजेस है, बट इमरजेंसी के बारे में बात में करेंगे बात, ठीक है? कोविड-19 भी हो सकता है, डिजास्टर्स हो सकते हैं. डिजास्टर से भी तो बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट शैटर हो जाएगी, पीपल शैटर हो जाएंगे. तो ये सब चैलेंजेस है. पॉवर्टी भी चैलेंज है. अगर पॉवर्टी बढ़ेगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगा, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी रेवोल्यूशनरी टेंडेंसीज इन द सोसाइटी. रिवोल्ट हो सकता है. सो दैट कैन ऑल्सो बी बेसिकली माओइज्म और नक्सलिज्म इज एन इश्यू विच इज कमिंग आउट ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. Yes. Religion itself cannot be. Religion is, if it is doing something which will lead to challenging the society. Religion by itself will not challenge. जैसे कम्युनलिज्म बोला उन्होंने. रिलीजियन अगर फंडामेंटलिज्म से भी ज्यादा कम्युनल फॉर्म ले, मैं आपको बाद में बताऊंगा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म which we will discuss afterwards. Yes. What? COVID or any act of nature can affect the sovereignty of a nation. How COVID can affect the sovereignty? Because COVID is a challenge to the government, because it creates a kind of a mess, right? If the government is not able to deal, or if the people coming on the street, suppose, then it may be any kind of disaster. It can challenge the sovereignty of the state. Can challenge, not necessarily I am saying. ऐसा जरूरी नहीं कोविड ने चैलेंज कर ही दिया, लेकिन कोविड के अंदर ये पोटेंशियल था कि वो सॉवरेनिटी को चैलेंज कर सकता था. आर वी क्लियर? राइट. सो हियर वी आर आल्सो टॉकिंग, लुकिंग इनटू व्हाट कैन बी द पोटेंशियल चैलेंजेस टू द सॉवरेनिटी. व्हाट वे कोविड कैन बी, डिड इट क्रिएट अ मेस और नॉट? आपको ये वर्ड पता है, एनर्की. एनर्की का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर. अगर किसी सिस्टम में डिसऑर्डर होगा तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह पाएगी. ठीक है? तो वहां पे पॉसिबिलिटी हो जाती है कि गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो जाए. राइट? गवर्नमेंट, भाई बहुत सारे एलिगेशंस गवर्नमेंट के ऊपर लगे कि नहीं लगे? गवर्नमेंट गॉट टार्निश्ड और नॉट? इट्स इमेज गॉट टार्निश्ड because of the floating bodies, because of the oxygen was not available. So many allegations were there against the government. कितना criticism हुआ? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पावर कम हुई ना. This is no, that's fine. I'm just saying that it may be a challenge. Challenge can be like 1% challenge, 0.5% challenge, right? Don't think in absolute terms. Yes. जुडिशरी इटसेल्फ चैलेंजिंग. तो चैलेंज तो कुछ भी कर सकते हो, आप भी चैलेंज हो सकते हो. एनीवन कैन बी अ चैलेंज टू द सॉवरेनिटी प्रोवाइडेड व्हाट यू आर डूइंग. अगर जुडिशरी कुछ ऐसा करता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो चैलेंज हो जाएगा. राइट? पोटेंशियल है, लेकिन कहां पर ज्यादा पोटेंशियल है हम ये देख रहे हैं. राइट? सर, is it important to equalize the notion of challenge to a state with challenge to a government? Is it important to equalize the notion that challenge challenge to the government and challenge to the state? Good question. आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हो ये अच्छी बात है कि स्टेट को चैलेंज कर रहे हो ये अच्छी बात है? हाँ, गवर्नमेंट को चैलेंज करो आप, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने इलेक्ट किया 5 इयर्स के लिए, परफॉर्म नहीं कर रहे, चेंज करो, हटाओ, दूसरा गवर्नमेंट लाओ. राइट? स्टेट को आप इजीली चैलेंज नहीं करते हो. ठीक है ना? स्टेट आपका एक बार बना है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं चैलेंज कर रहे हो ना रोज रोज. अगर हमारा सोसाइटी में बहुत चेंज आ गया तो कुछ चेंजेस की जरूरत होगी. वी विल डू दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, isn't it? So we will frequently challenge the government
but we seldom challenge the state, right? We frequently, you write this line. ऐसे statements आपको लिखने चाहिए because this is also about expressing. We one may frequently challenge the government. One may frequently challenge the government, comma, but seldom the state. But seldom the state. One may frequently challenge the government, but seldom the state. इसका मतलब समझ में आ गया ना? कोई भी आदमी गवर्नमेंट को तो इजीली चैलेंज कर सकता है, बार बार कर सकता है, लेकिन स्टेट को चैलेंज करना नहीं चाहिए यूजुअली. कभी कभी चैलेंज आप कर सकते हो उसको भी, बट देयर इज अ लिमिट फॉर दैट ऑल्सो. अभी कैन यू स्पीक अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? शुड यू हैव द राइट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमी है तो उसको दूर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा टाइम अगर चेंज हो गया, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर रही है, देन पीपल शुड डिमांड नो टू चेंज इट और नॉट. दिस इज द रीजन वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोई गवर्नमेंट अकेले नहीं करती है, गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स इनपुट्स फ्रॉम द पीपल. लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाती है, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द पीपल. We have got somehow settled with the term sovereignty now, the power, right? Settling down is very important, and you should also have the power to elaborate. और जैसे जैसे आपके classes हो गए ना, you will feel more and more empowered in every which way, right? Okay, yes. Is there any example where state was challenged? By whom? Oh, there are so many examples. अभी नक्सलबारी मूवमेंट क्या था? स्टेट को चैलेंज किया ना. वो क्या चाहते हैं? माओइस्ट चाहते क्या है? व्हाट डू दे वांट? दे वांट टू ओवरथ्रो दिस स्टेट. द स्टेट विच वी हैव टुडे, दे वांट टू ओवरथ्रो दिस स्टेट एंड रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स, सम अदर फॉर्म ऑफ स्टेट और सम अदर फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. हैव यू गॉट इट? तो जो लोग इस स्टेट में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं कर रहे, दे आर चैलेंज टू द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट. क्लियर? Okay. Less powerful. Now, this all powerful is not absolute power. All powerful means maximum power is with the, okay? Maximum. We are not saying absolute power. And I had made it clear earlier itself. All powerful does not necessarily mean absolute power, yes. Any movement can be a challenge to the government, may be challenged, may not be challenged also. JP movement was a kind of a challenge to the government. Yes, most of the time movements are challenges to the government, लेकिन उनकी डिग्री वेरी करती है. कई बार ऐसा होता है कि मूवमेंट बहुत पॉजिटिव होते हैं, गवर्नमेंट भी ओपन होती है सुनने के लिए, एंड इट एक्सेप्ट्स इट एंड चेंजेस थिंग्स. आरटीआई मूवमेंट क्या है आप बताओ? आरटीआई मूवमेंट जब हुआ इंडिया में 1995 से, ये बहुत वाइड स्प्रेड हो गया. आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट. उसके बाद it was the NDA government which brought the first Freedom of Information Act 2002, right, under Prime Minister Vajpayee. But that law was a very weak law. It was not a good RTI Act. Again, protests started. Then the next government which came to power, UPA government, brought in the real Right to Information Act which we have today. So, ये movement positive हुआ कि नहीं हुआ? Right? Government was also open and it was accepting these demands. Some movements, they become violent also, which will not be accepted by the government. Clear? So it depends. Protest कभी कभी पॉजिटिव प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, कभी कभी बहुत एनार्किक हो सकता है. बहुत वायलेंस अगर प्रमोट कर दोगे और इंसाइट कर रहे हो वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट, तो फिर सेडिशियस हो जाएगा. ठीक? Someone had a question? Not having a strong opposition is also a challenge to, no, government will become more powerful if opposition is not there, right? So it's not a challenge. It's not a challenge. But I will discuss this point what you are raising when we discuss democracy. We will talk about there, right? We'll understand properly the state को चैलेंज है. बहुत सारे एक्शंस गवर्नमेंट करती है, वो चैलेंज हो जाते हैं कोर्ट में. लेकिन आप कोर्ट में चैलेंज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी को ही चैलेंज करते हैं.
क्योंकि आप कुछ इमीडिएटली गवर्नमेंट को आप ओवरथ्रो नहीं कर पा रहे हो ना, आपने बस चैलेंज कर दिया, आपने कहा ये सही नहीं है, then you see the response of the government. So this cannot be considered a challenge to sovereignty of the government. This is a check on the government, but not a challenge to the sovereignty of the government. Yeah, maybe we can say even the companies and all, कोई कंपनी अगर बहुत पावरफुल हो गया, मान लो कि the one company start dictating its terms over the government, then the government sovereignty has gone or not? Big capitalists, they influence the government too much, they are arm twisting the government, then in that case it will be a challenge to the sovereignty. तो ये possible है. तो economic players भी हो सकते हैं जो challenge कर सके sovereignty को. So this question we can look into this afterwards. Maybe I will give you some questions also to practice, maybe brainstorm, but हम आपको बताएंगे पहले कैसे सोचना है और कैसे आंसर को आपको स्ट्रक्चर करना है. Then you will start that process. Let's move on now. So state और sovereignty हमें clear हो गया. Let's come to government now. Okay, government. What is government? What is government? Government is an authority or someone who's ruling, right? That means it has the authority. Government is an authority that has command, right? And I'll just write that has command. And command over what? We understand, over everything, but not in absolute terms. Not in absolute terms. Government cannot do anything it feels like, right? Its power is limited. Limited by Constitution of India, its power is limited. So an authority that has command, we can also say government is an enforcing agency. An enforcing agency. Enforcing agency. Enforce matlab necessarily implementing. Forcefully implement. आप नहीं भी चाहोगे तो वो होगा. आप टैक्स नहीं देना चाहते, but it has to be enforced, right? Enforce में word क्या है? Force word है कि नहीं? Force. Usually you use the word police force because police uses the force over you. Armed forces, we use that, right? Enforcement Directorate, ED क्या है? Enforcing agency, right? It also is enforcing. तो फोर्सफुली आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा. तो गवर्नमेंट इज एन एनफोर्सिंग एजेंसी. अगर गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में, आपके फेवर में कुछ भी करेगी तो आप अपोज नहीं कर सकते. एक लिमिटेड वे में कर सकते हो, बट इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल देन गवर्नमेंट यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट. टैक्स इम्पोज हो रहा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ट्रैफिक पुलिस वाला रोक रहा है, आपको रुकना पड़ेगा, अदरवाइज यू नो द कॉन्सिक्वेंस, राइट? सो दिस इज द power which the government has as an enforcing. What it enforces? It enforces law. So enforcement of, we can write here itself, enforcement of law. In fact, law भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जिसको यूज किया जाता है एनफोर्स करने के लिए. What is law? Law is an instrument of, ये लिख लिया आपने. Now you below this you write, law is an instrument of enforcement. Law is an instrument of enforcement. Law is an instrument of enforcement. If the government has to impose tax upon you, right? तो क्या लॉ बनाना जरूरी है? क्या बिना लॉ के टैक्स इंपोज किया जा सकता है? नो. आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल? 265 of the constitution, it says that no tax shall be levied without the authority of law. इसका मतलब है कि कोई भी टैक्स इंपोज नहीं हो सकता बिना लॉ, right? Or you can say that tax can only be imposed
बाय मेकिंग लॉ। अगर गवर्नमेंट को टैक्स इंक्रीज भी करना है ना तो उसको लॉ को चेंज करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट पता है आपको, आईटी एक्ट है, दिस अ लॉ राइट, इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स अगर बढ़ रहा है यानी कि लॉ चेंज होगा, राइट कोई नया टैक्स इंपोज हो रहा है तो लॉ के फॉर्म में जीएसटी एक्ट आया ना, क्योंकि जीएसटी आपका टैक्स इंपोज हो। क्लियर? सो लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनफोर्समेंट, ये एक एस्पेक्ट लॉ का है, बाकी हम बाद में देखेंगे और क्या एस्पेक्ट है। few things we'll have to understand for today. Now, India is a state. India is a state today, right? When it became state, when it became state, when it had 4 elements. 1947, before that India was not a state. Why? It had a territory, it had a government. Sovereignty of the government was not with people of India, but the sovereignty was with the British Crown. So it was state. It was a colonial state. It was a colonial state. Got the point? अब ब्रिटिश मिडिवल टाइम्स में क्या था ना, it was a state, but it was a monarchical state, या फ्यूडल स्टेट भी बोल सकते हो, फ्यूडल। आई विल टेल यू फ्यूडलिज्म आफ्टरवर्ड्स, राइट। एंशिएंट टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में इंडिया मोनार्किकल स्टेट था, फ्यूडल स्टेट था, फिर कॉलोनियल स्टेट बन गया। टेरिटरी भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, सॉवरेनिटी पीपल के पास नहीं है, वो ब्रिटिश क्राउन के पास था, तो उसको बोलो, आप क्या बोला, कॉलोनियल स्टेट। एंड देन आफ्टर दैट वी बिकेम व्हाट, नो, 15th of August 1947 India became a dominion state, right? Dominion state. Dominion का मतलब क्या है, चलो इसको लिख लेते हैं, evolution of state in India. Evolution of state in India. So first of all, there were, let's say, ancient times, ancient and medieval times. ठीक है, it is a, we can say, monarchical और फ्यूडल स्टेट। फ्यूडल मतलब क्या होता है ना, जिसमें आपके लैंडलॉर्ड होते हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वही लैंडलॉर्ड में से जो ज्यादा पावरफुल लैंडलॉर्ड हो गया वो नोबेल बन गया, और उस पावरफुल नोबेल में से एक मोनार्क बन गया। यही होता है ना, जागीरदारी होती है, जागीर देते हैं, बड़ी बड़ी जागीर, उसमें ज्यादा पावरफुल हो जाता है, मोनार्क बन जाता है। शेरशाह सूरी वाज एन अफगान नोबेल, देवर नोबेल्स, नो डिफरेंट नोबेल्स। पहले लैंडलॉर्ड्स होते हैं, और लैंडलॉर्ड में ज्यादा पावरफुल जो हो गया वो उसने अपनी आर्मी रखी, मिलिट्री रखी, तो और पावरफुल हो गया, तो वो क्या हो गया, नोबेल हो गया। तो इंडिया में बहुत सारे राजपूत नोबेल्स थे, अफगान नोबेल्स थे, बाहर से आए टर्किश नोबेल्स थे, राइट। सो मेनी नोबेल्स वे फाइटिंग फॉर पावर, जो जीत गया वो मोनार्क बन गया। ठीक है, सो इट वाज मोनार्किकल पावर और स्टेट और फ्यूडल स्टेट। देन कम्स द ब्रिटिश टाइम्स। तो ब्रिटिश टाइम्स को हम जनरली कह सकते हैं क्या स्टेट, कॉलोनियल स्टेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज 15th August 1947 to which year, 26th January 1950 भी इंडिया स्टेट था, लेकिन एक डिफरेंट टाइप का स्टेट था जिसको हम बोलते थे डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट, आपने अगर वो न्यूज़पेपर देखा हो, फ्राइडे था ना उस दिन, 15th August 1947 को फ्राइडे था। आई डोंट नो इफ यू नो दिस, हैव यू सीन द न्यूज़पेपर, स्टेट्समैन या कोई भी न्यूज़पेपर का 15th August का, एंड व्हाट वाज द हेडलाइन, टू डोमिनियंस आर बॉर्न। डोमिनियंस आर बॉर्न, इंडिया वाज अ डोमिनियन स्टेट का मतलब ये हुआ कि इंडिया सॉवरेनिटी तो है, लेकिन सिंबॉलिकली क्या है ना, आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है ना उस टाइम पे, वो प्रेसिडेंट नहीं था,
Who was the head of the state? Head of the state was the British Crown. Right? So this means that symbolically we were what state? We were dominion state. It was sovereignty was exercised in their name, though government was sovereign. We had the power, we had become independent, but symbolically it was exercised in the, please write in bracket, इसके बाद लिख लो आप लोग, symbolically, इसके बाद देखो dominion state के आगे, symbolically sovereignty was exercised. Symbolically sovereignty. Okay, I have access to the questions also now. I'll just take up the questions from the online students also. Symbolically, sovereignty was exercised on behalf of British Crown. On behalf of British Crown. Okay. I think you people also have given similar answers for the questions I had asked. Now I have got access to all your chat. You can keep asking me questions. Okay. I'll take them up in between. After this, what state we became? Now India is a state. Which state? What kind of state is it? 26th Jan 1950 onwards. क्या स्टेट हो गया? What state? A sovereign तो पहले भी था, but sovereignty exercise किसी के नाम पे हो रही थी. Now it is a republic state. India is a republic. अभी तो आप 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोलते हो ना, because we established the republic. Republican state also you can say, or you can even write republic state. Republic word का बहुत meaning है, which I will discuss afterwards. It's not that people generally say, no, I ask what is republic, and they say that elected head of the state. That is not the only answer of republic. Okay, that's very brief, and that's not the real answer. What it means to be republic, I will explain that to you after. We are clear about the state and what kind of state do we have now in India. So from 15th August 1947, we have this state. Sorry, from 26 January 1950, we have this state which is still going on and which is established how? How the state was established? Who established the state? Who has established the state? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. This means the Indian state. Are we clear? The very first line of the constitution establishes the Indian state. Clear? Preamble में जो लिखा है ना, पहले line, उससे क्या आप establish कर रहे हो? State. Which is what state? What are the characteristics of the Indian state? Obviously, it is sovereign. It has to be sovereign. Then it is also socialist state, democratic state, republican state, right? And secular state. So what is the nature of Indian state? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. ये तो clear दिया हुआ है. इसके अलावा और भी points हम add करेंगे. It is a welfare state also. You understand welfare? What is welfare? Welfare of the people. Welfare का मतलब क्या है? Upliftment of people. Everyone's upliftment. Upliftment of Mr. Adani, Mr. Ambani. Everyone's upliftment. Think of poverty. Common people who need it. That is closer. Welfare is always of the vulnerable section. Okay? Welfare is not of all. Welfare is of vulnerable section. Indian society में बहुत ज़्यादा vulnerable section. Right? Groups बहुत ज़्यादा. So we require a welfare state. Development is for all. Right? Scholarship program अगर run कर रहा है तो वो welfare and development program. Scholarship program, development program है, welfare program है. Welfare program. और construction of road क्या है? Welfare and development है. सबके लिए है ना वो तो. So development is for all and welfare is for vulnerable section. Right? A lot of time people equate the two. They don't understand the exact. ये precision बहुत जरूरी है.
अगर आपका प्रेसिशन सही है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, देन योर क्वेश्चंस विल नॉट गो रॉन्ग। ओके, तो स्टेट का क्लैरिटी हो गया। नाउ हाउ स्टेट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस इज आल्सो क्लियर टू अस। इंडियन स्टेट, बाय व्हाट प्रोसेस हैव वी एस्टैब्लिश द इंडियन स्टेट? पहले से कुछ चला आ रहा था और फिर उसमें चेंजेस हुए, फिर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, हमने डिमांड्स करी कि हमें चाहिए पावर, फिर हमने वो पावर ले ली, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट बनाया। और स्टेट का नेचर पता है आपको। हाँ, तो सॉवरेनिटी वाज मच मोर चैलेंज, इट वाज चैलेंज इंटरनली आल्सो। या तो इंटरनली ज्यादा चैलेंज था एक्सटर्नली से। आपको पता है कि एंशिएंट और मिडवेल टाइम में जो फोर्सेस होते थे ना, जो मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्स सब इंटीग्रेटेड होता था, क्योंकि बाहर से भी चैलेंज है और अंदर से भी चैलेंज। ठीक है, बहुत सारे नोबेल्स थे, वो भी चैलेंज है, सारा कुछ है, बट पीपल की सॉवरेनिटी नहीं थी पहले। राइट, हु वर सॉवरेन? द मोनार्क्स वर सॉवरेन। अभी आपने सुना होगा, लाइक मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस दैट वी कीप रेफरिंग टू राजधर्म। राजधर्म सुना है? राजधर्म। have you seen that press conference of Prime Minister Vajpayee when he had gone to Gujarat after the Godhra and post Godhra violence, and he had given a suggestion to the Chief Minister Mr. Modi there that आप राजधर्म का पालन करिए. This is what he had said. So राजधर्म is what Kautilya says, that above the king there is Rajdharma. King is not absolute power again. राइट आप बोलोगे कि किंग के पास सारा पावर है, कौटिल्य कहेगा नहीं, किंग के पास भी सारा पावर नहीं है, उसका पावर भी लिमिटेड है। अगर किंग ने कुछ गड़बड़ किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। कहां से मिलेगा? डिवाइन पनिशमेंट मिलेगा। गॉड विल पनिश द किंग, समथिंग विल, सम कर्मा थ्योरी इज देयर, नो? तो कर्मा वापिस आए अगर आपने कुछ गड़बड़ किया। ये एथिक्स है ना, देयर आर वैल्यूज इन्वॉल्व, जो कि एक इंटरनल कंट्रोल लाता है। किंग को पता है कि उसको गलत काम नहीं करना, उसको सही काम करना, राइटियस होना है। आर वी गेटिंग द पॉइंट? So this is Raj Dharma is also a form of, you can say, rule of dharma. Can we say rule of dharma? Can we compare it with rule of law? Now we will discuss the concept of rule of law. उससे मैं relate करूँगा इसको. Then you will understand this. Okay, so let's move on to the next now issue. What we need to know now is about different types of laws that we have. Okay, पहले law discuss कर लेते हैं, फिर rule of law discuss करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है स्टैट्यूटरी लॉ। यू हैव गॉट द पॉइंट। व्हाट इज स्टैट्यूटरी लॉ? लॉ एज मेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जैसे इनकम टैक्स हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, सोसाइटी एक्ट हो गया, ये सारे जो भी एक्ट हैं ये सब ऑर्डिनरी लॉ बाय सिंपल मेजॉरिटी। अभी क्या है, लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम। हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, इंटायर सिस्टम दैट वी हैव, what you call as our governmental system, right? या administrative system, governmental system, जो भी बोल लो उसको, हमारा जो भी सिस्टम है वो कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है? क्या सारा डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? नहीं दिया है ना। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स पावर्स, what all district magistrate can do, is it given in the constitution? No, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ भी नहीं लिखा है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बारे में। तो कहाँ लिखा है? कुछ लॉज होंगे जिसमें लिखा है, राइट? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पोजीशन क्रिएट किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में, जब दीवानी राइट्स मिले उनको बंगाल में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने कलेक्टर का पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोजीशन बनाया, राइट? 1772। आफ्टर दैट उनको पावर्स दिए गए कि आपको अगर रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो आपके पास मैजिस्ट्रियल पावर भी होना चाहिए। मैजिस्ट्रियल पावर का मतलब हो गया द पर्सन हु कैन यूज फोर्स, जो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करे। बाद में दिया तो फिर बाद में वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनके जो पावर्स हैं ये लैंड रेवेन्यू कोड में दिए थे पहले। किसमें दिए थे? लैंड रेवेन्यू कोड में। फिर और लॉ बने। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सुना है आपने, सीआरपीसी, उसमें कुछ लॉ दिया गया, मैजिस्ट्रियल पावर दी गई।
ठीक है, सीआरपीसी में, सीपीसी में, राइट। आईपीसी में तो खैर सारी वो दिए हुए हैं, पनिशमेंट्स दिए हुए हैं, उस ऑफेंसेस दिए हुए हैं। बहुत सारे लॉ और हैं, कस्टम एक्ट हो गया, एक्साइज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया। इन सब लॉज में, शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट, बहुत सारे लॉज हैं, उन सब लॉ में पावर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिए गए। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर है। आई मीन दैट्स द रीजन व्हाई यू पीपल आर हियर फॉर, राइट? बिकॉज यू नो दैट यू विल बी getting into that position because it brings diverse functions, diverse power. तो लॉज में सारा डिटेल दिया हुआ। तो हमारा जो सिस्टम है, इसका जो फ्रेमवर्क है ना, पूरे सिस्टम का, what is this? We call this as the framework of the government, right? Please draw this. You should draw this. Framework of the government. फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, डिटेल नहीं, सिर्फ फ्रेमवर्क। ये किस में दिया हुआ है? दिस इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल रादर से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में दिया। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन इंडिया? यस, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट laws, constitution plus constitution amendment laws. This is clear to us. Framework is given in the constitution. What all is there in the framework, that also I will tell you in some time broadly. क्या क्या constitution में दिया है. Then if I can draw like this, let's say यहाँ पे और details दे दिया हमने, right? Right. So can we write like this now? More details about the system is given in what laws? More details of the system is given in which laws? Statutory laws. Statutory laws. आप जब कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, आर्टिकल्स में वहां पे लिखा रहेगा, दिस इज समथिंग विच पार्लियामेंट बाय लॉ विल डिसाइड। उधर लिखा हुआ है कि ये हम यहां नहीं लिख रहे कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज समथिंग विच पार्लियामेंट बाय लॉ विल डिसाइड। जैसे आपका ये है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। रिवर वाटर डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व करेगा? ये आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट टॉक्स अबाउट रिवर वाटर डिस्प्यूट। यानी दो स्टेट के बीच में अगर रिवर वाटर को लेके कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो कैसे रिजॉल्व होगा, ये कहां दिया है? आर्टिकल, किस आर्टिकल में दिया है? यू शुड रिपीट द आर्टिकल विद मी। 262 में दिया है। उधर क्या लिखा है? उसमें लिखा है आर्टिकल 262 सेज दैट द रिवर वाटर डिस्प्यूट शैल बी डिसाइडेड एज डिटर्मिन्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। यानी कॉन्स्टिट्यूशन खुद कुछ नहीं कह रहा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? ये पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगा। तो फिर पार्लियामेंट ने जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हुआ ना, कब हुआ मेजर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इंडिया में? मेजर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ? 1956 में हुआ, which I will discuss in like maybe after 2 classes we'll discuss this. 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइज हुए तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट आएगी ही नहीं आएगी रिवर वाटर को लेके। तो उन्होंने उस टाइम पे फिर एक और लॉ बनाया, रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो अब डिटेल कहां दिया है? उस लॉ में दिया है। ये लॉ किस तरह का लॉ है? व्हाट काइंड ऑफ लॉ इज इट? इट्स अ स्टैट्यूटरी लॉ, ऑर्डिनरी लॉ, राइट? So what we are saying, more details are given where? In statutory laws, right? Clear? ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है, statutory laws are made by, please write it there, made by parliament, or you can even say made by legislature, right? In fact legislature लिखना ज्यादा better है। Statutory law are made by legislature, better, right? Legislature. Who makes the constitutional laws? Made by, इधर लिखो, made by
मेड बाय कंस्टिट्यूएंट बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मत लिखो क्योंकि पार्लियामेंट भी तो चेंज करता है ना, तो आप लिखो क्या, कंस्टिट्यूएंट बॉडी। कंस्टिट्यूएंट बॉडी पहले क्या था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली था, अभी क्या है, पार्लियामेंट। क्लियर हो गया। हु मेक्स इट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आर मेड बाय कंस्टिट्यूएंट बॉडी। अगर आपको याद नहीं हो तो उधर ये भी लिख लो ब्रैकेट में, अर्लियर इट वाज कंस्टिट्यूएंट असेंबली, नाउ इट इज पार्लियामेंट। और अगर सेटल हो गया इधर, इधर लिख लो, तो फिर उधर लिखने का जरूरत नहीं है। ओके सर, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू राइट इट देयर इटसेल्फ, बहुत बेसिक है एंड इट विल गेट रिपीटेड ऑल्सो। डन। अभी एक और टाइप का लॉ है, इसमें भी अभी बचा हुआ है, राइट। अभी हमें ये फिलअप करना है। अगर इसको फिलअप करना है, अब हमारा पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया। ये कौन सा लॉ है, एनी गेस? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। आपने सुना होगा रूल्स बनते हैं, राइट। इस सिटीजनशिप एक्ट, अब सिटीजनशिप का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड सारी चीजें नहीं दी हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, फ्रेमवर्क दिया हुआ है। देन द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ कॉल्ड एज सिटीजनशिप एक्ट, राइट। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना, जिसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, सिटीजनशिप आप कैसे एक्वायर करोगे या कैसे गिव अप करोगे, ये लॉ में दिया हुआ है। किस लॉ में? स्टैट्यूटरी लॉ। देन सिटीजनशिप एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू गिव डिटेल। अगर आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा कि नहीं? यू हैव टू फिल अप द फॉर्म, राइट। अब वो फॉर्म का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा डिटेल इस लॉ में नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये किस तरह का काम हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, डिटेल्ड काम हो गया, रोज का रूटीन वर्क हो गया। तो ये कौन बनाएगा? ये बाय रूल्स पार्लियामेंट कहता है कि वी विल नॉट गेट इनटू ऑल द डिटेल्स, वी विल मेक द लॉ टू रेगुलेट। आफ्टर दैट फर्दर डिटेलिंग शुड बी डन बाय द, हु विल डू? द एग्जीक्यूटिव्स विल डू, officers and the ministers will do. We will not give all the details. So ye detailing, please write here now, further details given in rules and regulations. Rules and regulations. Who makes rules and regulations? Bracket में you should write made by executive. Rules and regulations are made by executives. Rules and regulations are made by executive. And what are these laws? What are they called? Administrative law. कैमरे के उसमें बाहर तो नहीं जा रहा? Clear? So how many types of law we have now? 3 types. What are they? Constitutional law, statutory law and administrative law. Who makes constitutional laws? Constituent body. Who makes statutory laws? Legislature और parliament, because India में central government को हम के legislature को हम parliament, ठीक? And who makes administrative law? Executive. And they are basically in the form of rules and regulations. Clear? तो अगर आप once you will get into civil services later on, जब आप secretariat में जाके secretary बनोगे, तो ये आपका रेगुलर काम होगा कि आप कोई ड्राफ्ट बन रहा है रूल का, उसको आप चेक कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज दैट्स मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। इनफैक्ट पॉलिसी भी बनाते हैं वो, बट पॉलिसी हम बाद में करेंगे, राइट। अभी वी आर फोकसिंग ऑन। So 3 types of laws are clear. How things are detailed is clear. Yes. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अगर लेजिस्लेचर के अंदर है तो वो लेजिस्लेचर की पार्ट होगा ना, राइट। तो लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगा, उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी बैठेंगे लेजिस्लेचर में और ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी बैठेंगे, रूलिंग पार्टी के दूसरे मेंबर्स भी बैठेंगे, ठीक है।
तो आप ये नहीं बोलोगे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाता है, लेकिन क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं बना रहा, कौन बना रहा है? पूरा लेजिस्लेचर बना रहा है। हु मेक्स द लॉ? स्टैट्यूटरी लॉज? लेजिस्लेचर, नॉट पॉलिटिकल। Okay, political executive is part of legislature, but there are other people also in the. Okay, so done with this. No questions? Any question from anyone now? No? Okay, good enough. Now let's move to constitution and constitutionalism. Yes. सीआरपीसी सीआरपीसी एंड सीपीसी को सर किस में इंक्लूड करते हैं? CRPC और CPC को किसमें इंक्लूड? इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टैट्यूटरी लॉ, क्योंकि ये बहुत सारे कोड जो पहले के हैं ना, ब्रिटिश टाइम्स के बने हुए, उनको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एज सिमिलर टू द लॉज एज मेड बाय द पार्लियामेंट। क्लियर? तो वो स्टैट्यूटरी लॉ ही हो। ऐसे पहले के बहुत सारे लॉ हैं, कोड्स है, रेवेन्यू कोड, आई विल टेलिंग यू नो, लैंड रेवेन्यू कोड एंड ऑल ऑफ देम आर स्टैट्यूटरी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ टू डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप बहुत सारे चीजें लिख सकते हो। पहली बात क्या लिख सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। लेट मी जस्ट सी द क्वेश्चंस ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो। फजल अली कमीशन, ओके, you people keep giving the answers, but you're not asking me questions. Good enough. Fine. Yes, basic law of the land we can say, or we can also call this basic law as the first law, right? First law of the country or the land. Second thing we can say, constitution is a framework of the government. Framework of the, अब यहाँ पे मैं government नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे दूसरा term लिखूंगा, नहीं state भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखें फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आपका फोकस किधर है? एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर है, ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर है। जब मैंने पॉलिटिको वर्ड यूज किया, इसका मतलब कि हम पॉलिटिकल कंपोनेंट भी इंक्लूड कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी इंक्लूड कर लिया और लेजिस्लेटर्स भी इंक्लूड कर लिया, लॉ मेकर्स भी इंक्लूड कर लिया। तो ये पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उसमें आ गया, राइट? जुडिशियल आया इसमें, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव में। जुडिशियल आया इसमें, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाए, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए। ठीक है, ये जनरल टर्म वी यूज सम टाइम टू रिप्रेजेंट दिस एंटायर। क्लियर? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट, तो वो सिर्फ स्टेट का फ्रेमवर्क नहीं है, गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ एस्पेक्ट भी दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ स्टेट तो नहीं लिखा ना। स्टेट क्या है? स्टेट तो वो 4 एंटिटी हो गए, 4 एलिमेंट हो गए जो बताया आपको। उसके अलावा और डिटेल्स भी तो दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स तो स्टेट नहीं है ना, तो बट वो सिस्टम का पार्ट है, इनके रिलेशनशिप का पार्ट है। तो दिस इज अ बेटर टर्म टू बी। बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, इट इज क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ द सिस्टम दैट यू हैव। किसका? तो स्टेट में सब कुछ नहीं, स्टेट में सब कुछ है, बट इफ यू विल जस्ट से फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट, तो उसमें आप सारा डिटेल नहीं दे रहे हो ना। स्टेट का मतलब क्या है? व्हेन यू आर सेइंग स्टेट, वी आर सेइंग दिस इज एन एंटिटी व्हिच इज हैविंग अ गवर्नमेंट। लेकिन आपको प्रिसाइसली बोलना पड़ेगा ना कि मैं स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं या गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूं। डिटेल नहीं होता ना, स्टेट क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। तो इट इज बेटर टू टॉक अबाउट द सिस्टम। ठीक? ओके, देन वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन, इट establishes relationship, minimal, it establishes relationship between what and what? Government and governed, right? citizen भी लिख सकते हो आप, governed, government and governed,
those who are being governed. नॉन सिटीजन भी कई बार होते हैं जिनको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट. फॉरेनर्स आए इंडिया में, उनको भी तो रेगुलेट करेगी ना. तो गवर्नमेंट and governed, right, establishes this relationship. Then write one more point after this. Done with this? One more point you'll write about constitution is that constitution, it establishes and elaborates on the organs of the government. Organs of the government, right? What are the organs of the government? Legislature, executive and judiciary. Establishes and elaborates on the organs of the government. What is? Establishes and elaborates on the organs of the government. You are asking this? What it means, organs? Okay, let's see this also now. Basically, ये आपका गवर्नमेंट है, ठीक है. गवर्नमेंट स्टेट का पार्ट है, लेकिन स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट. 4 एलिमेंट स्टेट के हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्टेट? गवर्नमेंट. बिकॉज इट इज थ्रू द गवर्नमेंट ओनली दैट स्टेट फंक्शंस. It is through the government through which state is manifested. Please, you can add one more point. Go back to government, where we have written something about government. Have we written something about government? We have. Please add there. Government is a manifestation. It is manifestation. Just add to government. It is manifestation of the state. Manifestation of the state, and its action arm. Manifestation of the state and its action arm. Clear हो गया आपको सेंटेंस? गवर्नमेंट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेट का मतलब उसका एक फॉर्म है, यानी एलैबोरेट फॉर्म ऑफ स्टेट किस में दिखेगा आपको? गवर्नमेंट के फॉर्म में देखें. हैव यू सीन द स्टेट? You see the state first and foremost in terms of the traffic police persons on the streets. That is state for you, is it or not? Traffic police person, they are the representative of the state. जब आप पुलिस को देखते हो तब आपको रियलाइज होता है कि कोई है, राइट. पावर है, अथॉरिटी है, स्टेट है, राइट. तो गवर्नमेंट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेट एंड इट्स इज एक्शन आर्म. स्टेट ऑपरेट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. हु इज कंट्रोलिंग द टेरिटरी, हु इज कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, हु इज मेंटेनिंग द सॉवरेनिटी? सब कुछ गवर्नमेंट कर रहा है. So it is the action arm of the state, right? So term state or government, many a times we use it interchangeably also. एक की जगह दूसरा टर्म यूज कर सकते हो, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. कहां पे गवर्नमेंट टर्म यूज करना है और कहां पे स्टेट यूज करना है, ये आपको क्लैरिटी धीरे धीरे हो जाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टेट और गवर्नमेंट में अंतर है, लेकिन दोनों को हम कई बार एक दूसरे के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. ऑर्गन्स क्या है? नाउ यू से दैट वी हैव government has sovereignty, right? Sovereignty means power, all the power. You have a question? Establishes and elaborates on the organs. Relationship नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे अभी. Relationship भी होता है. It tells about the organs of the state. Government system. जुडिशरी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट है. जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें हम उसको अज्यूम कर लेंगे, ठीक है. अभी आप लोग उससे जस्ट सेटल, डोंट वरी अबाउट द टर्म, इतना ज़्यादा नहीं करो वरी. जस्ट आई वाज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग सम टर्म्स टू यू, राइट. लेटर यू विल रियलाइज दैट दिस इज एप्रोप्रिएट टर्म टू बी यूज्ड. मैनिफेस्टेशन मतलब किसी भी चीज का जो आपको दिख रहा है, जो फसाड है, जो सामने से दिख रहा है, वो उसका मैनिफेस्टेशन. तो स्टेट आपको किस फॉर्म में दिखेगा? गवर्नमेंट के फॉर्म में तो दिखेगा ना.
क्योंकि वो उसका एक्शन आर्म है, एंड दैट इज ऑल्सो द. Now, when we are giving the power to the government, will you give all the power to the government? No, right? Because if you will give all the power to the government, then government may become dictatorial. Then it will do anything, it will do massacres, it will kill people, whatever. So we will not give all the power. सारा power हम government को नहीं देंगे. उसका power को क्या करेंगे हम? सबसे best way to limit the power is divide and rule. Divide कर दो, राइट? लेकिन हम वर्ड डिवाइड यूज नहीं करेंगे, सेपरेशन यूज कर. तो हमने इसको क्या किया, गवर्नमेंट के पावर को 3 ऑर्गन्स में सेपरेट कर दिया. डिवाइड वर्ड यूज ही नहीं करते, सेपरेट वर्ड यूज करते. ठीक है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स हैं. ऑर्गन्स क्यों बोल रहे हैं? ऑर्गन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन में भी है, इधर भी ऑर्गन है. आपका बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो अगर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, राइट? एक ऑर्गन काम करना बंद किया, काम हो गया फिर उसके. सेम इज विद द स्टेट ऑल्सो. स्टेट ऑल्सो और द गवर्नमेंट functions through its organs. If one organ doesn't work properly, the system will fail, right? So if the 3 of them will coordinate properly and work together, then the government will work properly. That's the reason we are using the term organ, because it is indicating the 3 important components of the. So we have separate, this is called as what? Separation of power. ये आप लोग प्लीज ध्यान रखो कि ये डिवीजन ऑफ पावर नहीं है. ठीक है? डिवीजन ऑफ पावर होता है when you are dividing the power between central government and state government, that is called as division of power. Separation of power क्या होता है? When you are separating the power among the 3 organs of the government, we call this as separation of power, right? So it establishes and elaborates on the organs of the government. In the constitution, there's a detail about parliament, there's detail about the judiciary, there's detail about the executive also, but not complete detail. Framework is given, which we have already written in the previous point. Clear? Then constitution also maintains and protects rights of the individuals. Even you can say groups also, but आपने अगर individuals लिख दिया, it's fine. What is politico-administrative system? I hope it is clear now. But don't worry about this term, right? लिख लो अभी, मैं बाद में और elaborate करूंगा उसको. You will get an idea. Right? Then what constitution does is that constitution, it limits the power of the government. देखो ये इतने सारे अपने पॉइंट्स लिखे ना, अभी क्वेश्चन कैसे आता है, उधर 4 ऑप्शन दे देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? अब ये आपको याद है, इससे रिलेटेड आप और भी डिराइव भी कर सकते बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग. वो तो वर्ड्स एक्सप्रेशन चेंज करते रहेंगे, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो यू विल मार्क इट करेक्टली कि क्या एग्जैक्टली है. दिस पॉइंट इज क्लियर टू अस. लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट और नॉट, और डज इट गिव पावर टू द गवर्नमेंट? It limits only, or does it give also the power? Both. First it gives the power and then it limits the power. डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके पास पावर है और नहीं भी है. ये पावर है और क्या नहीं है, वो जो नहीं है उधर लिखा वो नहीं. Now can we work, I had asked you this question before also, can we work without a constitution? Can we work without constitution? We can work without constitution. Yes? Earlier times when systems were simple, easy, population was less, then we did not require. Abhi to in our modern system, things are so complicated, sophisticated, that without constitution it is very difficult. But still it can be done. Still it can be done. Is it? Now there is a term I am introducing, which you people should know, is constitutionalism.
right? This is a new term, right? Please write a new heading now, constitutionalism. हाँ लिख सकते हैं उसको भी. इट्स ऑल्सो फर्दर स्कीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. वो एक्चुअली ऑर्गन्स का पार्ट भी हो जाता है. कभी कहते हैं ना फोर्थ पिलर फिफ्थ पिलर बोलते हैं ना, तो मीडिया इज अ फोर्थ पिलर फिफ्थ पिलर से टर्म यूज करते हैं. यानी और ऑर्गन्स है, इंडिपेंडेंट बॉडीज है, सब पार्ट्स है. यस. तो सी आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल द डिटेल्स ऑल एट वन गो. ठीक है, तो धीरे धीरे और एलैबोरेशन हो. Constitutionalism. This question is very frequently coming in UPSC these days. पिछले 3-4 साल में यूपीएससी ने 3 बार ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड, बिकॉज ये सब कॉन्सेप्चुअल है, पीपल डोंट गिव इंपॉर्टेंस. नाउ दे हैव स्टार्टेड टू गिव इंपॉर्टेंस. कैन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन? Can we have constitutionalism without constitution? No. What is the first? You need to know the meaning of the constitutionalism. Constitutionalism is basically the idea right here, idea of limited government. Limited government. Idea of limited government. Limited government means limited powers of the government. Okay, I could have written limited power also directly, but I have written limited because many a times only this expression will be used. Limited government, what it means? It means limited power of the government. अब पावर को लिमिट करना है, कैसे भी करो. Right? Constitution is a way to limit the power of the government or not? So constitution is one of the ways to bring constitutionalism. But government's power can be limited even without a constitution also. Is it possible? Kautilya had said that the king should follow Raj Dharma. Right? Raj Dharma becomes a limitation on the power of the king or not? It becomes a limitation on the power of government or not? Can we say there was, Kautilya is talking about constitutionalism? Can we say that? Yes, we can say that. Because Kautilya also wants to limit the power of the government. Right? And to limit the power of, he knows that the king, the individuals, everyone is so selfish that they will, start following their own selfish interests. Right? As a realist philosopher, he thought that. Then he said even the king should be controlled. We will not give all the power to the king. And who will control? Then he says that the king should be controlled by Raj Dharma. उसको ये एहसास होना चाहिए हर समय कि उसके ऊपर भी कुछ है. उसको ये पता होना चाहिए कि उसको गलतियां नहीं करनी. Have you got the point? So this concept of rule of today, it has taken the form of what you call as rule of law. Or you can say the rule of the constitution. Earlier it was rule of dharma, Raj Dharma as it was. So this was also a way to establish limited government. So the constitutionalism is an idea, right? It's an idea of limited government. Howsoever the power is limited, whether it is limited by constitution or whether it is limited by ethics or values, right? Or it is limited by the religious scriptures, or it is limited by maybe by bifurcating the power of the king or the ruler itself. You know that in ancient Rome, there used to be triumvirs. And triumvirs, like there were 3 rulers in Rome. Julius Caesar happened to be the last of triumvirs when he beat other people and got the supreme power in his own hand. अगर आपके पास 3 रूलर हैं तो वो एक दूसरे को चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. We have the concept of Trinity in Hinduism also, in Christianity also. Right? We don't believe our God also. We don't give absolute power to one God. Then we created 3 gods and they will check each other's power.
This is constitutionalism. Have you got the point? Constitutionalism is the idea of limited government. Can there be constitutionalism without constitution? Yes, there can be constitutionalism even without constitution. Is constitution a guarantee of constitutionalism? Another question. Is constitution a guarantee of constitutionalism? कि अगर आपके पास constitution है तो constitutionalism होगा ही. जरूरी है साहब? No. Suppose there is a dictator, right? I am a dictator, and now I have framed a new constitution, and in the constitution I have taken all the powers to myself. समझ आ गई बात? कॉन्स्टिट्यूशन है, सारा पावर किसके पास है? डिक्टेटर के पास. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इधर? नो, बिकॉज द पावर इज नॉट. हैव यू गॉट द पॉइंट? Please write one statement. Wait. First, let's just elaborate on what all this means, right? Idea of limited government. Idea of limited government also means one more thing, that it basically establishes what you call as rule of law. Rule of law. Because constitution is also a law, no? Right? It establishes rule of law. Something is above. That law can be in any form. That law can be constitution also. It can be statutory law also. That law can be religious law also. Here the term law, it can be anything. But I am not talking about the concept of rule of law as given by Dicey, which I will discuss with you. Okay? Rule of law. See one more thing now. Just write these terms, then we will see. We will try to relate. This means that government cannot become arbitrary. Okay? What we say, the concept of constitutionalism means emphasis on non-arbitrary government. Would you like government to become arbitrary? What it means? Arbitrary means what? Arbitrary means कुछ भी कर सकता है. Anything. It is like absolute power. Should government be act arbitrarily with you? Should police force act arbitrarily with you? आके दो लगा दिया, हो गया, कुछ भी एनकाउंटर कर दिया. Encounter is arbitrary, no? Or is it legal? Huh? It is. In some situation it can happen, barring that it is arbitrary action. Encounter is arbitrary. It is not, that means government is not following rule of law. Okay? It's an arbitrary act. लाठी चार्ज, पुलिस लाठी चार्ज कर रहा है, वो भी तो arbitrary हो सकता है. Many times it is arbitrary. Most of the time it is arbitrary action. कई बार करना पड़ता है उनको, because we are such strong people that we don't otherwise budge, so they have to treat us with lathis, right? You got the point. What is arbitrary government or non-arbitrary government? See, this term arbitrary is very, very important. What is the opposite of arbitrary? Don't say non-arbitrary. Opposite of arbitrary is what? With the word, this word, which is opposite of arbitrary, has been used at different places in the constitution, and it's a very important term. Welfare? No. Liberty is a good thought, but it is not the word I'm looking for. Freedom, okay. Restraint. Oh, good, very good, very good. But that's not the answer. But still good. Reasonable. ठीक है, चलेगा. Reasonable word, ठीक लग रहा है. Reasonable is a very important word. Fundamental rights, are they absolute? No.
Then what? There are reasonable restrictions. What restrictions? Reasonable and not arbitrary restrictions. कुछ भी restriction नहीं लगा सकते आप, reasonable होना चाहिए, right? That means if you are saying emphasis on non-arbitrary government, or we can also say, or what government? Reasonable government. Reasonable. आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ की बात होती है. वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्लासिफाइंग पीपल. इट सेज ठीक है, आप सबको इक्वली ट्रीट करो, लेकिन जो लोग पीछे खड़े हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा कि नहीं? विल यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर पीपल हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड, राइट? तो उनको आपको डिफरेंटली ट्रीट करना है कि नहीं करना है? करना है. तो आपको पॉपुलेशन में क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा. जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस क्लासिफिकेशन है ना, ओबीसी क्लासिफिकेशन है, एससीज एंड एसटीज आर क्लासिफिकेशन. इज इट रीजनेबल और इज इट आर्बिट्ररी? So we also use this term reasonable classification. Even classification cannot be arbitrary. Are you getting the point? Are you getting and feeling the importance of the terms now? Right? The word and the opposite also. You better understand a term when you look for opposite meaning. Then you better understand. राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार ये टर्म यूज होगा, रीजनेबल, विच इज नथिंग बट एन इंडिकेशन ऑफ दैट गवर्नमेंट कैन नॉट बी आर्बिट्री. एंड गवर्नमेंट नीदर ऑफ थ्री ऑर्गन्स, इवन जुडिशरी कैन नॉट बी आर्बिट्री, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी आर्बिट्री, लेजिस्लेचर ऑल्सो कैन नॉट मेक आर्बिट्ररी लॉज. अभी ऐसा नहीं है कि वो पार्लियामेंट में सारा प्रोसीजर को बाईपास करके जल्दी से पास कर दिया, तो ये क्या हो गया? आर्बिट्ररी हो गया. Right? So constitutionalism means reasonable government, non-arbitrary government, and a government which is following rule of law. Right? अभी देखते हैं rule of law का, लेकिन उसके पहले just write one more statement. Just write this to be very very clear. That write down. There can be constitutionalism. There can be constitutionalism even without a constitution. There can be constitutionalism even without a constitution, and constitution is no guarantee, and constitution is no guarantee of what? Constitutionalism. Has it ever happened that in India constitutionalism has suffered? We failed to maintain constitutionalism in India. When it happened? During emergency. And similar such situations, it keeps happening. Whenever police does encounters, it means constitutionalism is suffering. Whenever government is becoming arbitrary or treating people arbitrary, means we are not following constitutionalism as a value. We are not following it. Have you got this? What all challenges are there in terms of, if you understand constitutionalism and you know the issues, you can easily relate, right? That where all government has become arbitrary. There are so many incidents that government becomes arbitrary. Many a time judges are not properly appointed. They are bypassing the procedures for appointment of judges. They are bypassing the procedure for passage of laws, right? Policies are not properly deliberated. इमरजेंसी को क्यों आर्बिट्री बोलते हैं? क्योंकि इमरजेंसी के लिए आपने कैबिनेट मीटिंग भी नहीं बुलाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही लेटर चला गया प्रेसिडेंट के डायरेक्ट. दैट्स व्हाई दे से इमरजेंसी वाज एन द एक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी वाज आर्बिट्ररी.
And whatever happened during an emergency, government acted arbitrarily, right? Many which ways we have seen many governments have acted arbitrarily. बहुत बार human rights violations होता है. Armed forces are doing human rights violations. All of this can be considered as part of government is getting arbitrary. Clear? So you also should start thinking about, like, when we have discussed something, right? We are writing in terms how to elaborate, and in thinking also you should think more and relate every issue with other issues. Much more clarity will come. You will become very, very comfortable with the subject. Now let us talk about rule of law. वो term हमने पहले use किया, but now I will elaborate a little more on this term. Yes. There are such possibilities where the police can take some such actions, right? Which is part of their actions. Process is detailed in the Indian Police Act, in the CRPC also, right? There is, but then the problem is that जहां पर आपको allow किया है 5% करने के लिए, वहां पे आप 70% कर देते हो. वो सिचुएशन जो उसमें मेंशन है कि ये सिचुएशन में कुछ इस तरह का एक्शन लिया सकता है, वो सिचुएशन नहीं थी, but still you have taken that. Most of the time the situation is not appropriate. That becomes a problem. Rule of law. If there is rule of law, then who is not ruling? If there is rule of law, then whose ruling is clear? Law is ruling. But who is not ruling? That means I'm basically asking, what is the opposite of rule of law? Rule by law. No. Rule by law will be similar to rule of law. Dictatorship, right? Rule of dictator. Or better you say that rule of persons. Please understand this. It's important. If there is rule of persons, persons means I have the power, I will use it the way I want. You have the power, you use it the way you want. Is it good? Oh, we can do anything. I can do anything. You can do anything. Rule of persons is not good, right? आपने पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया, अब उसको बोलो आप कुछ भी करो. Is it fine? So how will you limit his power? You will say you will act according to certain laws. Who's supreme? Person is not supreme. Law is supreme. Persons will act according to law. Have you got the relationship? Now it is better clear that instead of rule of persons, we should have rule of law. पहले क्या था? Ancient times में, medieval times में law का component बहुत कम होता. Laws were not elaborate, they were not written, they were not made. Mostly it was rule of person. तो धीरे धीरे करके वो लोगों ने लॉ बनाने शुरू किए, राइट? हैव यू हर्ड ऑफ 12 ऑर्डिनेंसेस ऑफ जहांगीर? जहांगीर का 12 ऑर्डिनेंस आया. तो जहांगीर was supposed to be, he was considered as one of the most just rulers during the Mughal time. He adhered to justice, and for that he had brought in the 12 ordinances, laws. Kautilya had also favored earlier codification of laws. लॉ को लिखा जाना चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन सारा लॉ आप डिटेल में नहीं लिख सकते. लेकिन टुडे द सिस्टम हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड, द मॉडर्न सिस्टम इज सो सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड दैट नो मैटर व्हाट यू विल हैव टू यूज मेक लॉज. बिना लॉ के अब काम नहीं, आप नहीं दे सकते पावर इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन. के हैंड में पावर कब दोगे? जब वो पर्सन के क्वालिटीज बहुत ज्यादा अच्छे होंगे. समवन हु कैन कंट्रोल हिमसेल्फ, उसको लॉ की जरूरत नहीं, उसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है दैट द पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी हाई इंटेग्रिटी, दैट पर्सन विल नॉट डू एनी रॉन्ग, इज वेरी एथिकल. देन यू मे नॉट गिव. बट आर वी लाइक दैट?
We are not. So we require law to be followed. Are we clear now? What is rule of law? According to A.V. Dicey, now this concept of rule of law, ये काफी ज़्यादा इसमें थोड़ा डेप्थ है इस कॉन्सेप्ट में, राइट? क्योंकि ये ब्रिटिश सिस्टम से इवॉल्व हुआ है और इसका एक देयर इज अ प्रॉपर स्पेसिफिक मीनिंग टू दिस. Okay, I may not get into the entire detail right now, but let's still discuss some aspects. According to, please write, according to A.V. Dicey, according to A.V. Dicey, it means rule of law, right? It has three aspects. A.V. Dicey is a British political philosopher and legal expert, right? The legal expert and a political scientist from Britain, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में दिया है. तो अगर ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में दिया है तो इंडिया में पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होगा. He has given 3 points. Out of that, 2 are applicable to India. We will have to see that. What are the 3 aspects? First aspect is supremacy of the law. Is it clear? Supremacy of the law. Supremacy of the law. इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ऊपर क्या है? लॉ है. लॉ के ऊपर कुछ नहीं. राइट? इज गॉड अबव द लॉ? Is God above the law? If you follow this principle, then God is not above the law. Because this is a modern idea where we are not following the rulings of the God. We don't even know whether a God exists or not. We are setting aside those questions. This is how we decide, the humans, we as people are deciding how we want to run our society. And we want to run our society by laws which we will make. Are we getting the point? God के ऊपर law है कि नहीं है? This is a question of ideological question, philosophical question. But if you are in legal parlance, if you are following rule of law, then law is right. So supremacy of the law, yes. But the monarch doesn't have all the power there, no. Earlier it was. Now things have changed. It is not. It is just in the name of the monarch, but the power is not with the monarch. Okay? Law is made by the parliament. Parliament has all the power to make any law. Monarch can do nothing about it. No, nothing. Okay? Even if it had vetoes in the time of Queen Anne, it was in mid-16th, 17th century, they have not exercised any such power. The power of parliament is sacrosanct, supreme in Britain. Okay, I will come to this point. Yes, someone had a question. Yes, so that means they are not following Dicey's concept of rule of law. I said, according to this, if you follow this law, if you follow this principle, right, in our modern system, if you are following this, it means law is. But here also, on certain ground, like in as I told you, in Britain, no, law cannot be questioned. Because parliament has made the law and law cannot be questioned in Britain. I will elaborate why afterward. But in India, we can question the laws on the basis of whether it is right or not, whether it is righteous law or not. Law भी तो गलत हो सकता है ना, क्योंकि हम ही बना रहे हैं ना लॉ, उसमें भी तो गलती हो सकती है. बट ब्रिटेन में क्या है, उनका कहना है कि हमारा पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं है और जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगा वो सही हो. किस बेसिस पे दे आर सेइंग दिस, वी विल सी दिस आफ्टर. So first is supremacy of the law. Second is equality before law. Equality before law. ये आपका रिलेटेड हो गया अब आर्टिकल 14 से भी, राइट? बिकॉज आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हो.
So that will, when we will discuss Article 14, I will come and refer to rule of law. Right? Equality before law means everyone is equal before the law. Will not differentiate, but it does differentiate, no? It does differentiate. How it differentiates, as I told you, classification, SC, ST, OBC, so law is differentiating. But for some purpose, for some reason, it can. But right now we are not getting into. Right now, according to this principle, everyone should be treated equally before the. अगर लॉ बना है तो वो सबके ऊपर एक जैसा applicable. बाद में then they realized that no, everyone is not in same circumstances. Then they said people under similar circumstances should be treated similarly, and in different circumstances differently. This came in afterwards, which we will discuss when we discuss Article 14. वहां पे हम ये डिटेल में डिस्कस करें. And the third aspect of Dicey's rule of law, third aspect is, you have written the first two, right? First is supremacy of law, second, and third one is primacy of right. Primacy of right. ये थोड़ा complicated है. Let me not explain this completely over here, because you will fail to understand it completely without us discussing the British Parliament and its powers. बिना उसके समझ नहीं आएगा. अभी आप ये समझ लो इतना, इसको ऐसे समझते हैं. In India, we have got fundamental rights. Who is giving fundamental rights to us? Constitution is giving, right? Now in Britain, do they have a constitution in Britain? No, constitution is there, but as a scattered document. There is no single document in the written form. One document as constitution is not there. In Britain, people also have rights, right? They have this called as Bill of Rights. There's a law made by Parliament which gave them the rights. But they are saying that rights are not given by the Constitution. What are they saying? Rights are not given by the Constitution. Rather, Constitution is a product of rights. Now, see this. One case is right is giving the Constitution, right? Another is Constitution is giving the right. India में कौन सा है? This one is there in India. Write this clearly. Mention this in your notes also. Rights are derived from the Constitution. These are still the basic concepts going on right now. I have not yet started with the topic. Okay. Second is, Constitution is there because of rights. In Britain, they say that why are they making the Constitution? Because people's rights are to be protected. Right? तो उनका rights कहाँ से है? कहाँ से मिल रहा है rights? You know, Britain का history, the history of Britain is very important, though you people will not study the history of Britain in that detail, but I'll keep giving you references. In your ethics, you will come across a philosopher called as John Locke. Have anyone heard of John Locke? You have? Okay. What is the importance of John Locke? Like in today's world, when we are following these modern ideas of, institutional ideas, parliament and all these bodies, the major contribution of John Locke. John Locke can be considered as the father of the parliamentary form of democracy. John Locke had said that we have, and not only Locke, even for that matter, there were other philosophers. आपने रूसो का नाम सुना है? Rousseau was a French philosopher, right?
हॉब्स, लॉक, रूसो का नाम एक साथ दिया जाता है इन पॉलिटिकल साइंस. दे हैव गिवन द social contract theory of how state comes into existence. But that's not important for us. Why I'm mentioning this is these three philosophers, and especially Locke, they have talked about natural rights. What have they talked about? Natural rights. And they say that rights are natural. We are born with the rights. हमारे पास rights हैं, और because we have rights, that is why we require law, and that is why we require constitution, so that rights can be maintained. Have you got the point? It is because of the rights that we have the constitution. उनका explanation क्या है? In Britain, what is the explanation? Please write Britain this side. Their explanation is that constitution is there because of right. इसके नीचे आप लिख लो इसको. Constitution is there because of right. Constitution is there because of rights. और हम क्या कह रहे हैं? राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, क्योंकि वैसे हमने कभी सोचा ही नहीं राइट्स के बारे में कभी, क्योंकि हम हमेशा ड्यूटीज के बारे में बात करते थे. इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, एंड नॉट ओनली इंडियन, द ईस्टर्न फिलोसफी इन द वर्ल्ड इज मोर फोकस्ड ऑन ड्यूटीज देन राइट्स. बात समझ में आ रही है आपके? आप when you are born in Hinduism, you are born with some debts, ऋण, and then you have to get rid of those debts towards your elders, towards towards the society, towards the government, towards everyone, and towards your teachers, towards yourself, everything. So it's a duty driven society. हम तो राइट्स के बारे में बात करते ही नहीं थे ना. तो जब हमने मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व किए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तब हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि राइट्स हैं उनके. तो हमें लिखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, और बताना भी पड़ेगा कि आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपको राइट्स दे रहा है. बात समझ आ गई आपके भी? इन इंडिया राइट्स हैव बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ लोग इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, कुछ लोग इसको कॉन्ट्रडिक्ट. some we are now saying India is a mother of democracy. How far this is truth is okay, fine. It may be, it may not be also. Just by calling it, it will not become. But yes, there may be something on the basis of which the statement has been made. Some truth is there. अभी कल को ये बोलेगा नहीं, India was a right oriented society. कोई बोल सकता है ना कि हमारे सोसाइटी में पहले से ही राइट को इंपॉर्टेंस दिया जाता था. हो सकता है, क्योंकि फ्रीडम तो था ना इंडियन सोसाइटी में, बोलने का, एक्सप्रेशन का तो फ्रीडम था. इंडियन सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन अ प्लूरल सोसाइटी. प्लूरल का मतलब समझते हो आप लोग? प्लूरल सोसाइटी मीन्स मल्टी कल्चर भी नहीं हुआ उसका मतलब. प्लूरल का मतलब होता है कि आप बहुत सारे आइडियाज और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करो, अपने आइडियाज और ओपिनियंस को थोपो नहीं. इंडिया का ट्रेडिशन तो यही है ना, दैट यू आर ओपन टू एवरीथिंग. तो इफ यू आर ओपन टू एवरीथिंग, इफ देयर इज प्लूरलिज्म, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा? आपके यहाँ फिलोसोफर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने, यू नो, दोज हु हैव स्पोकन अगेंस्ट द गॉड्स ऑफ हिंदुइज्म, and you have respected them also. All kinds of philosophy. So there has been pluralism in the society. So some people may say that rights also, some kind of rights were there, freedom of expression was there. ये भी बोल सकते. I'm just elaborating on this so that you people start thinking. अभी एक छोटे से कॉन्सेप्ट को मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे हमें इस तरह से चीजों को समझना. Let's come back. Let's just come back to this. Just keep this in your mind for now. Even if you have not understood it completely, don't worry. But just remember this, that in India, rights are product of constitution. In Britain, constitution is product of. So primacy of rights, या ये कॉन्सेप्ट जो थर्ड पॉइंट लिखा आपने, ये इंडिया में एप्लीकेबल है कि ब्रिटेन में है? Say it clearly, loudly. Britain, right? So primacy of rights is applicable in, please write it there.
applicable in Britain. So the third principle of Dicey's rule of law is not applicable in India, but partially it may be applicable, which I will tell you after. For now, you just write it here, applicable in Britain. डाइसी का रूल ऑफ लॉ याद हुआ आपको? 3 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, supremacy of law means who is not supreme? Person is not supreme, rather the law is supreme. Second point. And third, good, primacy of rights is clear. Primacy of rights means constitution or law also are product of right, right? And this is not applicable in case of, as such, in case of, in a very limited way it may be applicable. I will tell you how afterwards. And this is very interesting. आपने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सुना है ना? बेसिक, उसको अगर आप थोड़ा डाइसेक्ट करोगे तो आपको इससे रिलेट हो जाएगा बात. I will tell you how. Okay, because in Kesava and Bharti case, when basic structures doctrine comes, that means certain structures of the constitution cannot be changed. उसको हम इससे रिलेट करेंगे बात. Primacy of rights is applicable in case of clear. तो ये हो गया हमारा कुछ basic concepts clear. Now I think we can start with one more concept we need to know, but I think I will integrate it as part of the salient features of the constitution itself. Let us start with our topic now. The first topic of the syllabus is salient features of the constitution. You people have any questions? Yes, I'll come. Just one question. Sit and ask. They have mentioned constitutionalism is all about limitation on government, Limitation. on governmental powers. So can't we write just simple limitation? What is the use of that word constitutionalism until it's still derived from the constitution? Means we are limiting the government, and we are saying that that limitation power is also drawn or coming from the constitution itself. Then it is necessary to say that it is constitutionalism. Otherwise, we can simply say that it is limitation. No. Say constitutionalism is the idea. Right? Constitutionalism is the idea. Ism means what? Ism. Something is ism means it's an idea. Ideology. So constitutionalism means the idea. What idea? Not constitution, but the idea of the constitution. Idea of constitution means keep in mind the idea of the constitution, whether you have constitution or not. But keep the idea in your mind. And the idea of the constitution tells you, constitution limits the power of the government, and the idea of constitution also limits the power of. Are you getting it? Without having constitution in reality, you can still have the idea of the constitution. Clear? So without having constitution also, you can have the idea in some form. Okay? That one statement which we have written, no, that constitutionalism can be there without a constitution, and constitution is no guarantee of constitutionalism. This is very important statement. That should be clear to you. I have already explained this. If it is not clear, you can always ask me maybe after the class. Okay? Anything not clear? Your question. Raj Dharma. What is Raj Dharma? What is Raj Dharma? Okay, sorry. Raj Dharma. Dharma means what? Dharma is not religion. Dharma is in the Hindu philosophy, the term dharma is not religion, though generally we equate it, but it is not religion. Dharma is righteousness, it is about duties, right conduct. Right? So it is referring to duties. Raj means government, state. What are the duties? What shall be the duties of the state? Follow your duties. Which duties? Kautilya says, these are the ideal duties. What is written in your Vedas, what is written in your scriptures, what your Hindu philosophy says, follow those ideas.
In fact, the concept was there even in the medieval times. You know, in India, we have wonderful rulers, in the sense that most of our kings, rulers, monarchs, whether it was in the ancient times or whether in the medieval times, they were benevolent rulers. They were not dictatorial. Very few dictatorial rulers. Even those who are criticized for being dictators, even they have done a lot of welfare work. You cannot segregate that. Right? Even medieval times, generally the idea of government or the limited government was there in the form of benevolent despotism. Because the Mughal rulers, they were following the benevolence, the idea of benevolence towards the subjects, which was basically derived from the Islamic philosophy. So all the religion in the world, they are actually teaching those values and ethics. Also, how the ruler should rule. Constitutionalism is inherent in the religions of the world also, which have earlier been followed. Are you getting the point? Right? How this idea of limited governments, it has then in modern times, when we started to have these laws and the constitution, which started limiting the powers of the government. Okay. So Raj Dharma is clear to us now. Okay. Fine. Good enough. So let's start with the salient features of the constitution. Salient features of the constitution, as I told you, we could have discussed this topic in the end also. I mean, if you want to really tell in detail, analyze the Indian constitution and says, you know, some constitutional experts like we have, if you have heard of Granville Austin, he was a constitutional expert on the Indian constitution. He has done a lot of work. And if you look at those persons, they will be able to tell, okay, these are the salient features of the constitution. How Indian constitution is different from other constitutions. What is so unique about the word salient means here what? It means what is significant, and what is unique about the Indian constitution. Right? What are the differentiating characteristics? Yes. So salient features, if you see, okay, one more thing I want to tell you is that all of you should have, this is a kind of unsolicited advice. If I can give you an advice, that you should have Bare Act of the Constitution. Bare Act means the very document of the Constitution, which is available in the form of Constitution of India preferably by PM Bakshi. So there are two versions available in the market, a smaller handy one and a bigger one. So be very careful if you are ordering online, right? That otherwise you will think about the handy versions and they'll send you the bigger version. So I will rather suggest purchase a small one, the handy version, right? So I think have you seen this small document, which you should buy and keep with you? And try to bring it, rather you should bring it to the class also. Okay? You should, because this is one document which I will keep referring to when I will discuss some articles. I'll ask you to see over there. Much more clarity will come to you. We have to read it. This is only for reference. You don't have to study it as a book. But we will just look at the important articles. And there are some notes also given there. Those notes in selective articles, selective important articles, that notes may be helpful for you to add more value to your. Okay, so if up to you though still, but I would prefer if you have this so that things will become much more easier for us. Because it will clear many things, not only the provision, but also amendments, when the amendments happened, how things were changed, what part was removed, what was added. आपको मैं बता रहा था ना कल के क्लास में कुछ लोग नहीं थे. Yesterday we were talking about Article 368. We said no, there was amendment earlier, the heading was something else, then the heading was changed. ये सब क्लैरिटी कैसे होगी? ये सब केवल बुक से पढ़ के नहीं होगी क्लैरिटी. जब आप देखोगे उधर कि अच्छा ये हेडिंग अभी है, उधर नीचे नोट में लिखा होगा by this amendment the heading was changed from this to this, तो उससे ज्यादा क्लैरिटी आती है और याद रहता है. एक जगह से एक ही तरह की चीज पढ़ोगे तो याद नहीं हो. अलग अलग फॉर्म में if you will expose yourself,
then things will become easier for you to remember. ठीक है? So first salient feature of the constitution is that Indian constitution, it is a what? One of the largest, you can even say it is the largest, but better to say one of the largest constitutions in the world. अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, जितना भी आप नोट्स में पॉइंट्स लिखोगे ना, एक एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन पे आपको और एलैबोरेट करना आना चाहिए, राइट? अब ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं? हर चीज के आगे वाई लगा दो, एवरी स्टेटमेंट उसके आगे वाई लगा दो, एक क्वेश्चन बन गया, देन देयर शुड बी आंसर टू दैट. व्हाई इज इट द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? रीजन ये तो नहीं हो सकता कि उसमें बहुत आर्टिकल्स हैं. Lot of amendments have happened. Constituent Assembly had taken many other constitutions of the world. Yes, that's important. Diversity of the country and the problems, challenges which we have faced. Right? Diversity not only in terms of identity, diversity also in terms of people, section, vulnerable groups. Right? So many problems. India is a developing society, no? Developing society has its problems. Because of the problems, you have to deal with them. So उसको constitution में add करना पड़ेगा. Diversity of different types. फिर legal experts ने बनाया. Constituent Assembly में legal experts थे. Legal experts है तो सब कुछ लिखेंगे उधर डिटेल में. वो भी रीजन हो सकता है, right? Any other reason? हाँ, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट. वेरी गुड पॉइंट. एक ही कॉन्स्टिट्यूशन आपका. यूएस में क्या है? स्टेट्स के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस है. सब स्टेट्स के अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कंट्री का अपना भी. इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों दिया है. ठीक है. Another reason could be people are not that aware, they are not that literate. तो बहुत सारी चीज आप कन्वेंशन पे नहीं छोड़ोगे, उसको क्लियरली लिखोगे. अगर आपने नहीं लिखी क्लियरली तो फिर डिस्प्यूट्स होंगे. ये भी बात. सो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई वी हैव द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड. सो वी शुड राइट दोस पॉइंट्स आल्सो इन द नोट्स नाउ. ओके, राइट डाउन द पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट आप जब भी करो ना, जब भी लिखो तो जो सीक्वेंस होना चाहिए पॉइंट्स का ना, वो पहले आप सोसाइटी के बारे में लिखना चाहिए, उसके बाद फिर पॉलिटी पे. Right, so first you talk about society. What is there in Indian society that we require this constitution is because of diversity. Diversity किस टाइप की है? Diversity of, there is socio-cultural diversity. There is religious डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक. अभी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से आपको लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजन बनाने पड़े कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना पड़ा. एक ही लैंग्वेज होता तो कोई बात ही नहीं थी, और उधर 4-5 आर्टिकल लैंग्वेज के रिलेटेड. अभी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपको ज्यादा डिटेल में लिखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे रिलीजन है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी लिखने पड़ेंगे. ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, यस, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके लिए अब स्टेट्स में कुछ रीजनल इश्यूज हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन हमने बनाए. इन कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव लिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोविजंस. जेएनके को भी तो स्पेशल स्टेटस था. सिमिलरली देयर आर स्पेशल प्रोविजन फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. आर्टिकल 371 कैपिटल ए बी सी डी सो ऑन, मेनी आर्टिकल्स आर देयर व्हिच आर दीज स्पेशल प्रोविजंस ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. और नॉर्थ ईस्टर्न के ही नहीं है, और भी है उसमें गुजरात, महाराष्ट्र और भी स्टेट्स के हैं स्पेशल प्रोविजन. ट्राइबल एरियाज है, उनके स्पेशल प्रोविजन. 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का ट्राइबल एरिया से रिलेटेड, दोज आर स्पेशल प्रोविजंस व्हिच इज अगेन रिफ्लेक्टिंग द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी व्हिच इज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज ऑफ दिस
there has to be, you can write with respect to this, there has to be special provisions. सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोविजन आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, राइट? डाइवर्सिटी एक पॉइंट हो गया. We will come to that. Done with this? Okay, we will continue now. The points further. First point was diversity. Second point will be the enormity of problems. Right? Within bracket you can write India being developing society. अगर इंडिया डेवलपिंग सोसाइटी है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा? पॉवर्टी से रिलेटेड काम कुछ होना चाहिए, इनइक्वालिटी को एड्रेस करना होगा, राइट? सोशल जस्टिस, we have to bring social justice in the society, and there has to be welfare measures. तो कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिलेटेड भी होंगे, स्पेशली डीपीएसपी में ज्यादा प्रोविजन है इससे रिलेटेड. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, फंडामेंटल राइट्स में भी है. कुछ राइट टू एजुकेशन की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पीपल आर इलिटरेट. तो उधर एक आर्टिकल आपको ऐड करना पड़ा सिर्फ इस इश्यू के लिए कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए. क्लियर? So because India is a developing society, and one more feature of developing society is that developing society is always a conflict-ridden society. Conflict-ridden society. देखो इस तरह के ये सब एक्सप्रेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, फ्रेजेस, यही सब यूज करना है आंसर. डेवलपिंग सोसाइटी इज अ कॉन्फ्लिक्ट-ridden सोसाइटी. कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो गए तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होगा वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? सेंटर और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो इंटर स्टेट काउंसिल चाहिए. जीएसटी इशू पे डिस्प्यूट हो रहा है तो जीएसटी काउंसिल चाहिए. सेंटर स्टेट में रेवेन्यू एलोकेट करना है, फाइनेंस कमीशन चाहिए. ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन, यू हैव टू मेंशन इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट विल आल्सो मेक इट बल्कि. क्वेश्चन को बहुत ब्रीफ में भी आंसर किया जा सकता है और उस पर एक किताब भी लिखी जा सकती है. ठीक है? व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू रीजनेबली एलैबोरेट कि अगर वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, आपको 200 वर्ड लिखना पड़े तो आप आराम से उस पर. ये पर्पज होना चाहिए. कभी भी आप आंसर स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, इस तरह के इश्यू आ रहे हैं तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए. एंड यू शुड हैव एन एज ओवर अदर पीपल. राइट? आई एम प्रिपेयरिंग यू हियर फॉर दैट एज. लोग 5 पॉइंट लिखेंगे, आपको 8 पॉइंट लिखेंगे. ठीक है ना? बुक में भी 5 ही दिया हो बट आपको 8 लिखेंगे. आप अपने से डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो. अगर ज्यादा आपका सोचने का दायरा होगा ना, आप सोसाइटी से भी रिलेट कर पा रहे हो, चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देख पा रहे हो, यू विल बी एबल टू राइट 1 or 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. दिस इज योर एनालिसिस. ओके? More reasons why India has one of the longest constitutions or the biggest constitution in the world is because constitution made by, देखो I am now using a different expression, right? Because question में आपको सरप्राइज करने के लिए वो कुछ भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. They may give you this question, explain how the Constitution of India follows a comparative approach, right? So constitution made by कंपैरेटिव अप्रोच. अब मैंने जस्ट ये एक टर्म इसलिए यूज कर दिया सो दैट यू ऑल्सो नो व्हाट इज कंपैरेटिव अप्रोच. क्या है कंपैरेटिव अप्रोच? कंपेयर करना. कैसे बनाया कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ हैव यू मेड द कॉन्स्टिट्यूशन? बाय कंपेयरिंग इट विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. So basically what we hear is that we have Indian constitution is a basically an aggregation. एक और टर्म आया आपके लिए, ये भी आप यूज करो, एग्रीगेशन भी. ऐड करने की जगह एग्रीगेशन वर्ड यूज करो. एग्रीगेशन ऑफ गुड फीचर्स इन अदर कॉन्स्टिट्यूशंस of the world
Here, we have taken so many things like fundamental rights. We have taken from which constitution? US Constitution or Britain? US parliamentary system we have taken from Britain. Okay, we will see this. We will see the list also, though it's not very important to be discussed in the class. Now, once we have discussed all the concepts, you can see the list by yourself also from where what has been taken. Right. So we have followed comparative approach, and someone had answered this, that this is the reason why it has become one of the largest constitutions. Another reason why it is the largest constitution is because based upon Government of India Act 1935, and this itself was an elaborate document. Detailed provisions. Okay, there is a question from Rohit. Okay, let me just go through their question once. It will help you all also. Okay, Prakhar is asking why only crime against state. I was talking about no crime against state. वो seditious की बात कर रहे थे हम, sovereignty की जब बात कर रहे थे, crime against state. So why only crime against state? There could be crime against citizen which might hamper the sovereignty. Crime against citizens can hamper the sovereignty. Yes, it can, because अगर किसी का murder हो रहा है तो who's failing? Who's failing? If suppose I murdered someone, who has failed? State has failed. State failed to maintain the law and order, no? So वो connected है, right? So you can say this. Is pro-Khalistani movement challenge against sovereignty of the state? Pro-Khalistani movement, yes it is, because it is of course going against the territory of India. It will be, yes. Okay. Okay. What is the difference between Republican and democracy? I have told you that I will explain this in detail afterwards, right? Because today I'm not, it will take some time for me to explain. So first I will discuss democracy and then we'll see republicanism. Okay. What resource or what source or book you can read along with the classes? Okay, I think you did not attend the yesterday's session. For now, you just focus on your class notes and your booklet. That's it. Okay. For reference purpose, I have suggested 2 books. Right? What were they? Lakshmikant and D.D. Basu. PM Bakshi is not a book. Don't count it as a book. PM Bakshi is an organ of your body now. Okay. You have to keep with yourself all the time to refer the article. It's not a book. Book we are referring, 2 books I have referred is Lakshmikant, because most of the people I personally like D.D. Basu much more, but because Lakshmikant is a good compilation because everything is at one place. But D.D. Basu, if you want for reference purpose, you can use that book in some areas. It's a very good book, but then it's a advanced level book. So if you will refer it right now, you may not understand, but once the classes are over, then you will start understanding everything. So if you want, it is not required. You just focus on your class notes and your booklets, and then later on all the current affairs, whatever current affairs you are getting. Okay. I am so sorry that I missed. I just was wondering that you people are only answering questions, but there were questions in between. Okay, I'll be more careful now. What is the difference between dominion and republican state in India? Is it clear? Dominion, sovereignty symbolically exercised by British Crown. Republican means we have our own president, head of the state. Okay. It is better. No, you can also answer the questions, right? I really appreciate your patience. These people have put in a lot of questions. I just missed them. Okay. What is the difference between arbitrary government and unitary government? What is the difference between arbitrary government and unitary government? This question has been asked by Shubham.
Unitary means there is only one level of government, central government. That's it. Now, whether it is arbitrary or not is a different question, right? So you cannot compare unitary with arbitrary. अगर आपका फेडरल गवर्नमेंट भी है, मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट से गवर्नमेंट, अब वो सब आर्बिट्री हो गए, so that federal government can also become arbitrary. Unitary government can also become arbitrary. So they are two different aspects, should not be compared. If there is supremacy of law and not of people, then isn't it contradictory in India? Supremacy of law and not of people. Okay, supremacy of law, एक बार हम बात कर रहे हैं rule of law की, और फिर हम बात कर रहे हैं sovereignty of people की. Good question again, right? Is it contradictory or not? Very good question. Sovereignty of people and rule of law. Is it contradictory? No, it is not, because rule is made by people also, that is also right. People's representatives have made the rules, the laws, that's correct. Law is protecting people's sovereignty, and people's sovereignty is also having a control over the laws, whether they are correct or not. So both the things have been integrated in our system. We have both the things. We have people's sovereignty also, and we have rule of laws, both together. They are integrated. Okay. What is the difference between freedom and liberty? I will tell you this. Freedom and liberty. Anyone would like to try this? Which is bigger concept, liberty or freedom? You want freedom or you want liberty? Do you want freedom or liberty? Liberty is something minimum required. लिबर्टी चाहिए तब जब आपको आप खुद से रूल नहीं कर रहे हो, एक फॉरेन कंट्री आपके ऊपर रूल कर रहा है, राइट? या फिर एक गवर्नमेंट है जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर कर रही है या एनफोर्स ज़्यादा कर रही है. फ्रीडम इज समथिंग विच यू विल लुक मोर एंड मोर फॉर. यू वांट मोर एंड मोर फ्रीडम, राइट? फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ डेवलपमेंट, फ्रीडम कि सब लोग इक्वल रहे, वो भी तो फ्रीडम है ना. फ्रीडम इज फिलोसॉफिकल ऑल्सो, राइट? यू वांट सैल्वेशन, राइट? सैल्वेशन इज व्हाट? फ्रीडम, अल्टीमेट फ्रीडम. So freedom is a broader concept and liberty is a narrower concept. Liberty is required as a citizen first. Basic जो आपकी freedom चाहिए आपको अपने individual को बनाए रखने के लिए, to maintain the sanctity of your individuality, right? To remain alive and express and get your basic needs fulfilled. This would be liberty. Liberty may become a little more also, but freedom has no limitations. So freedom is a broader word and liberty is a narrower concept. In fact, if you understand Marxism, then Marx never uses the word liberty. He always uses the word freedom. Freedom and alienation. Liberal thinkers use the word liberty. But it's not that liberal thinkers will not use freedom. They will also use freedom. But अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी. But socialism और communism, इसका भी brief मैं दूंगा आपको एक क्लास में. Briefly, I'll make you understand all these concepts. Okay. I hope now your questions are answered. What is politico-administrative system should be clear by now. Sanjay had been asking this question. Even if politico-administrative system is not clear, don't worry about it. You will get an idea. Okay. Once we'll get the system and we'll understand the structure, you will get the idea. Okay. PFI is also a big challenge to sovereignty of India. Yes, you can say that. It depends upon what kind of activities these groups are undertaking. Okay. So please write this point. Detailed provisions. Please write this. You will have to write this. Just dictate this one. Detailed provisions in the Constitution help. Detailed provisions in this point I'm writing elaborately. Detailed provisions in the Constitution help in protecting the Constitution. Help in protecting the Constitution against any kind of
subversions, against any kind of subversions. Subversions, subversion का मतलब, subversion means something which can be demolished, right, aborted. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में लिखा हुआ है तो मुश्किल होगा कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाना, राइट, टू से इट इन अ रॉ टर्म, राइट. अगर नहीं लिखा डिटेल में तो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन हो गया, राइट. कोर्ट के पास पावर ज्यादा हो जाएगा ना, जज के पास ज्यादा पावर हो जाएगा, किसी के पास भी ज्यादा पावर हो जाएगा अगर डिटेल में नहीं लिखा. डिटेल में लिखा देन इट इज एक्सप्लिसिट, क्लियरली गिवन देयर, ऐसा ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना. और कम लिखोगे अगर, ओके नाउ यू टेल मी, अ मोर इवॉल्व्ड सोसाइटी विल हैव अ बिगर कॉन्स्टिट्यूशन और मोर अंडर डेवलप्ड सोसाइटी विल हैव अ बिगर कॉन्स्टिट्यूशन. आंसर इज क्लियर ना. तो डिटेल प्रोविजन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आसानी से उसको आप सबवर्ट ना कर, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भी दिया तब भी फॉलो नहीं करेंगे. तो अगर नहीं लिखोगे तब तो और भी ज्यादा कुछ भी करेंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? So it is good that if you are writing things in detail, subverting the constitution will become, right? Then we say that another point for is constitution for this, you people have answered, constitution for both center and state, right? In fact यहाँ पे आप ये point भी लिख सकते हो कि it talks about 3 tiers of government. You people have heard about 73rd Amendment Act. What is that? पंचायती राज. तो पंचायती राज सिस्टम क्या हुआ? 73rd अमेंडमेंट के पहले क्या पंचायती राज इंडिया में नहीं था? था, राइट. इंडिया में वी एस्टैब्लिश पंचायती राज फ्रॉम 1959 ऑनवर्ड्स, बट वो फंक्शन ठीक से नहीं, अभी भी नहीं करता खैर, बट देन इट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. So then they said we will add the provisions in the constitution itself. अभी क्या है कि पंचायत का जो डिटेल्स है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. Will it make it bulkier or not? Right? So the provision related to the 3rd tier also, like there are 3 tiers of government which is making it bulky, bigger constitution. This point will also come. Then you can also write down here special provisions for, though we have in a way written earlier, but still it is important to be mentioned separately, special provisions for vulnerable sections. Special provisions for vulnerable sections. For vulnerable sections. Vulnerable sections क्या है आपको पता है? विमेन के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 में है. Then do we have special provision for SCs and for STs, right? For backward classes there are special provisions, right? For linguistic minorities, for religious minorities there are special provisions. These are all vulnerable sections, right? Then one more point you write after that is a detailed set of fundamental rights. Detailed set of fundamental rights and directive principles. TPSP is also making constitution bulkier. Detailed set of fundamental rights and DPSPs. अभी आपने एक एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड कर दिया, राइट? DPSP का जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत है? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग सोसाइटी है, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो स्टेट को, गवर्नमेंट को बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाने पड़े. दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द Constitution. Then another point is that Indian Constitution is an organic document. Write down. Next point is Indian Constitution is an organic document and keeps pace. Indian Constitution is an organic document and keeps pace with the changing times through what? Through blank amendments. Put a blank.
Okay, put a blank there and then write amendment. Then you will fill the blank. Through blank amendments, what should I write in this blank? अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हुआ ना, और क्या अमेंड कर रहे हो यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन ही तो अमेंड कर रहे हो. थ्रू व्हाट अमेंडमेंट? क्या आप आंसर लिखोगे तो उधर क्या लिखोगे? वर्ड बड़ा क्यों हो रहा है? ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बार बार कर रहे हो अमेंडमेंट ना. फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट, frequent amendment. Why I am emphasizing on these words? Because this is how you are explaining in the answer, right? Through frequent amendment. That's why it is becoming bigger. And why? Organic means what? You know what? Why I have used the word organic there? Good, at least you asked this question. Indian constitution, the organic means it is a growing constitution. राइट. ऑर्गेन मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, विद इन ब्रैकेट राइट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. विद इन ब्रैकेट राइट एट देयर ओनली, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि वो चेंज हो सकता है, वो अमेंड हो सकता है, और हो रहा है. रिजिड नहीं है ना. Done. How many points are there? 9. We can go on and on. There are more points can be written, but this is good enough for you to answer the questions. This is what we should try to get, at least like 8, 9, 10 points. Then you can easily write 200 words on it. Elaborate on it. Clear? One more feature we'll discuss, and then briefly I will talk about, I will just initiate you with respect to answer writing, something, and then we will wind up the class. So one more point we'll write for today. Second feature, salient feature is that, which no one talks about this, but it is very important to be mentioned as such. ये आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, but try to understand its importance. How the Constitution of India is related to the society. Constitution, is it a legal document? Is it a political document? Or is it a social document? All of it. It is legal because it is the first law of the country. It is enforceable. It is political because, अब ये एक और वर्ड है political. इसको मुझे elaborate करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Political वर्ड का जो बेसिक मतलब है, पॉलिटिक्स किस लिए होता है? What is the purpose of politics? स्ट्रगल फॉर पावर. वो तो बेसिक पर्पस वो नहीं है ना. पावर क्यों चाहिए? पॉलिटिक्स इज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. पहला चीज ये आपको याद है. पॉलिटिक्स इज फॉर व्हाट? फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम सॉल्विंग तब होगा जब आप पावर में आओगे. जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जब वो उसके पास अथॉरिटी होगी, तब प्रॉब्लम सॉल्व होगा. So this is secondary. Have you got it? So constitution is a political document because it is trying to solve the problems of the society. Clear? ये लिखो नहीं अभी, ये इधर लिखना है. And third is social. Social means constitution, is it trying to transform society or not? Okay, if I ask you now, Constitution is transforming Indian society from this to this. From what to what? From what kind of society to what kind of society? From developing to developed. Constitution से developed नहीं बनेगा country. वो तो policies और schemes से बनेगा. Welfare to market. Market कहाँ है Constitution? Limited way. No, it's a very limited way. No. Okay, your answers are okay, but it's not complete. I'm looking for something here. This is the answer I was looking for. Very good. How have you answered this? Okay. Indian Constitution is trying to transform Indian society
from a traditional society into a modern society. Is it or not? पहले society कैसी थी? What was the features of traditional society? Orthodox, feudal society, patriarchal society, right? And Oriental. Oriental तो अच्छी बात है ना. Oriental तो आज भी है. Oriental means Eastern, which is following the ideas of the East. That's not a problem. Feudal, patriarchal, stratified, caste based, right? ये सब problems थी ना. Now we are moving away from it. We are moving towards what? Secularism. All progressive ideas, democracy, republicanism, remove all the privileges and all that. Everyone should be treated equally, what you people mentioned, but that was only a part of it. So Indian constitution is trying to transform the traditional society into a modern society, but at the same time, it is trying to keep intact certain traditional values also, which are aligned with the modern ideas. Are panchayats not traditional institutions? Panchayats in India were traditionally, in India we had panchayats. Now we are just transformed them into modern idea. So traditions have been transformed into modernity also. Are you getting the point? So at places we talk about conservation of our culture. We talk about in the constitution DPSP, do we talk about conservation of national monuments or not? Why do we have Archaeological Survey of India? Mandated by the constitution. Like, reference can be made to the constitutional provisions. Because we are trying to preserve our tradition culture also. So it is trying to modernize, but at the same time trying to preserve the traditions of Indian society. I think this feature can also be written in an analytical form when you are talking about what is the nature of the Indian constitution. What are the provisions which are modern provisions? What provisions are there which are related to traditional provisions of the traditions of Indian society? Have you got it? So how shall we write this now? What shall we write? Indian society, please write, Indian constitution is an endeavor. Indian constitution is an endeavor, प्रयास है, is an endeavor to transform a traditional society into a modern one, comma, keeping intact certain traditional values. Keeping intact certain traditional values. Have you got the point? What are we trying to say is clear in this, right? We are trying to transform also and we are trying to keep. You cannot just write transforming, then you will not talk about traditional ideas because that is also there in the, right? Okay, now let me just look at some questions in case. From primitive to socialist was also one of the answers. Primitive to socialist, एक तो आप उधर बहुत पहले चले गए, primitive is too early, और socialist तो अभी आया भी नहीं है, नहीं बात करते हैं socialism की, but socialist society is something which is very difficult to achieve, right? It may be ideal or near ideal. Communism is actually ideal. Oh, I will tell you, we will discuss, okay? Briefly we will talk about this also. Okay. अभी हम थोड़ा सा time we will spend on, as we had said, we will discuss something on answer writing. Okay. Today I am not discussing the MCQ questions. ठीक है? आपके पास जो भी आपको शीट मिला है, you will find अभी सारे क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे, but question number 1, 4, 7 and 9. Okay, please write it. Plus try to question 1, 4, 7 and 9 इसको आप पढ़ना कोशिश करो if you can answer them. But still there will be, still you will not be, because parliamentary system अभी मैंने discuss नहीं किया इधर, क्योंकि वो basic recorded session में I had discussed that, but I think I will have to discuss because many of you haven't seen that.
So I will have to discuss parliamentary system. उसके basis पे कर पाओगे, but still you read for these 4 questions. Question number 1, 4, 7 and 9. ठीक है? We will deal with most of these questions tomorrow. ठीक है? Otherwise, if you feel like going through all of them, also you go through them, see if you are getting something. But I don't think you'll be able to answer most of them right now. Okay. So what we are trying to do is that for few sessions from now onwards, we will be talking also about answer writing. क्योंकि ये आपको शुरू में ही अगर इसका exposure हो जाएगा ना, then it will become easy to start following it up. ठीक है ना? So one of the first things that you should know about answer writing के बहुत सारे steps हैं. ठीक है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आंसर राइटिंग में? सबसे पहला चैलेंज ये है कि आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आया कि नहीं आया. राइट? So first thing that you have to keep in mind, first thing in answer writing is understanding the here we are just talking about answer writing, and with respect to the main examination, obviously, understanding the question. Now, if you will have optional papers, in optional subjects, whatever I will discuss will be applicable for your optional also. You can follow these ideas there as well. In optionals, sometimes in some of the optionals, understanding of questions becomes difficult. But now what is happening is, even in GS paper, UPSC is asking optional standard questions, even in the GS paper. I don't know if you have seen the papers of the recent times. GS paper 1, 2, 3, 4, all of them, the standards of the question have gone up. They are asking bigger questions, more analytical questions, and you have to be very careful in understanding the question properly. और जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है तो कैसे करोगे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड? I am not demonstrating today, I am just giving you a brief. Having given you a brief for a few days, then I will start demonstrating through questions. Then we'll start applying these ideas. So first thing that you will do is, in understanding of question, is mark the, what you will do? Mark the keyword. कीवर्ड्स को मार्क कर लो. फिर कीवर्ड्स को मार्क करने के बाद ये चेक कर लो कि क्वेश्चन में इन कीवर्ड्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है. राइट? इंटर रिलेशन among keywords. See, in many cases, you may not have to apply this. This is just in case if you are finding it difficult to understand the question, then this is one approach which you can follow. पहले तो आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई किया, और मैं क्वेश्चन लेके डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा इसको कि क्या कीवर्ड है और क्या रिलेशनशिप है. फिर आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया. ठीक है? उसके बाद जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, अब ये हो सकता है कि उसमें एक पार्ट आंसर करना है या 2 पार्ट करना है या 3 पार्ट करना है. उसके सब पार्ट हो सकते हैं. ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि एक ही स्टेटमेंट लिखा है, सेंटेंस एक ही है, बट 2 चीज आंसर करनी है. वो पूछ लेगा व्हाट इज द नेचर एंड रोल ऑफ स्टेट. अब नेचर एंड रोल ऑफ स्टेट पूछा है, आप आंसर क्या कर रहे हो? आपको जितना स्टेट के बारे में आता है आपने उधर सब लिख दिया. दिस इज व्हाट यू डू. पूछा क्या है? नेचर पूछा है और रोल पूछा है, और या तो सिर्फ नेचर लिख के आ गए या सिर्फ रोल लिख के. 2 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे, एक नेचर के ऊपर, एक रोल के ऊपर. कीवर्ड से अगर आप ठीक से आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ में तो आपको लगेगा आ गया है, लेकिन आपको कंप्लीटली समझ नहीं आया, आपने कुछ ना कुछ मिस कर दिया. राइट? दिस विल हैपन, आई एम टेलिंग यू. एंड इन एग्जाम यू डोंट हैव द टाइम. जल्दी जल्दी पढ़ते हो, जल्दी लिखते हो. राइट? Because in UPSC, you have to write a lot and you don't have the time to look at the questions properly. Then there will be difficulty. आप उधर कुछ ना कुछ छोड़ के आओगे.
तो ये कर लो, एंड देन ऑन दिस बेसिस देन यू गेट टू नो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। ये आप लिख रहे हो, आप लोग ये नोट कर लो, ये चीजें नोट भी कर लो, आती हैं तो भी कर लो नोट। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, ये शुरू की बात है बस। फ्यू यू नो इफ यू आर नॉट यूज्ड टू आंसरिंग क्वेश्चन, जस्ट फ्यू डेज यू हैव टू जस्ट कीप दिस इन माइंड, फिर तो एक नेचुरल प्रोसेस अपने आप होने लगेगा, विल स्टार्ट हैपनिंग बाय इटसेल्फ। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। और पार्ट्स के अलावा एक और चीज आपको समझनी है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्लीटली। पार्ट समझ में आ गया तो कंटेंट का कंप्लीटनेस आ गया, हाँ ये एस्पेक्ट है। आंसर कैसे जनरेट करना है वो हम बाद में डिस्कस, अभी टुडे आई एम जस्ट डिस्कसिंग ओनली दिस वन एस्पेक्ट। बट वन इवन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन in letters also, in letters and spirit. Understanding the question in letters and spirit, इसका मतलब क्या हुआ? क्या कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है? ओके ओके, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा, ये समझ आ गया क्या क्वेश्चन पूछा, ये तो लेटर्स हो गए। लेकिन एग्जामिनर के मन में क्या था कि उसने ये क्वेश्चन पूछा, ये उसका स्पिरिट हो गया। जब आप क्वेश्चन को पढ़ के ये भी सोचो ना ये पूछा क्यों है, तब आपको उसको सही से आंसर कर। अगर मान लो अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर, राइट? मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटी का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर रिफॉर्म से क्वेश्चन आया, तो क्यों पूछा आपसे क्वेश्चन इसके बारे में, ये सोचोगे ना? इसलिए भी पूछा ना क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था, लॉज आए थे अभी, तो कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे ना इसको। बात समझ में आई? तो आपको यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट दैट व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आंसर। और कॉन्टेक्स्ट को इंट्रोडक्शन में ही लिखना होगा, मैं बताऊंगा कैसे करना। वैसे ही आप स्टार्ट करोगे, जब आप कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करते हो ना, तब फिर वो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, इसने सही स्टार्ट किया है, ही हैज गॉट द क्वेश्चन। तो लेटर एंड स्पिरिट दोनों में आपको उसको, इनफैक्ट इवन इन योर प्रीलिम्स ऑल्सो ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आप उधर भी आप ध्यान रखोगे कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, ये ऑप्शंस इस तरह से क्यों बनाए। इसको सोचने से भी कई बार आपको ऑप्शंस के उसमें से आप उसको एलिमिनेट, राइट? सो कॉन्टेक्स्ट जो ये है, इससे आप स्पिरिट से क्या क्रिएट होगा, स्पिरिट से क्रिएट होगा कॉन्टेक्स्ट, राइट? और लेटर्स से क्रिएट क्या होगा, कंटेंट। आंसर का, आंसर में क्या होना चाहिए, कंटेंट तो होना चाहिए, बट यू आल्सो नीड टू हैव कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यू विल बी एबल टू जनरेट ओनली व्हेन you have understood the question properly, what is in the mind of the examiner. In fact ये क्वेश्चन आया यूपीएससी में, preamble is a key to open the minds of the makers of the constitution. Preamble is a key, चाबी, to open the minds of the makers of the constitution. समझ आया क्वेश्चन? प्रियम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स। मतलब प्रियम्बल पढ़ के आपको यह समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, या क्या बातें उनके दिमाग में थी, या क्या उन्होंने ध्यान में रखा जिसके बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन, इजंट इट? भाई प्रियम्बल पढ़ के तो ये फील आ जाता है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी वो सेकुलर थे, वो सोशलिस्ट भी थे, वो रिपब्लिकन वैल्यूज में, डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग थे। काफी सारी चीजें समझ में आती है कि क्या वैल्यूज को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। यही इधर क्वेश्चन में अप्लाई होगा कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या है कि उसने ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पूछने के पहले आंसर आता है दिमाग में, you have an answer in your mind, that's why the question is coming, isn't it? The issue is there, examiner is thinking about this issue, and that's why he created a question. So a question is a key to open the mind of the examiner.
हैव यू गॉट इट? तो ये बात आप इतना बस अभी आज के लिए ध्यान में रखो आप।